Okay, so try to start with today's topic. Is there any questions you have in your mind? हाँ जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, बताइए। हम्म। नहीं ना। ओके, एंड बिफोर मूव ऑन टू इट, आकाश जी, लाइक बेस्ड ऑन बीटेक पर्पस आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको मैं क्लियर करवा दूं, ये जो बैच चल रहा है, ये जो यस अपडेटेड सिलेबस है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बैच का जो है परस्यू हो रहा है। ओके, यस सर। तो आई थिंक आपका तो IG2 क्लियर है, राइट? तो आपको उतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ एडिशनल चीजें ही आपको सुनने मिलेंगे यहाँ पे। ओके, और बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज यूजुअल लाइक योर प्रीवियस वन। ओके, इज इट क्लियर आकाश जी? हाँ जी, उनका नेटवर्क। आकाश जी, सर मैं आपका ऑडिबल? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। हाँ, मेरा वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रहा है कि सिर्फ आकाश जी के लिए ब्रेक हो रहा है? नहीं नहीं, आपका नेटवर्क सही है सर। क्लियर आई है थिंक वॉइस। आकाश जी आपका नेटवर्क थोड़ा इशूज है। एंड होपफुली जिन्होंने भी असाइनमेंट्स दिया था उनका रिव्यू होकर मिल गया है। आई थिंक आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया होगा। एंड दोज हु हैव नॉट completed योर होमवर्क, प्लीज complete it on time। और किसी एक लर्नर के असाइनमेंट्स मुझे थोड़ा ChatGPT वाला लगा। आई थिंक हेलो सर। हेलो। सकीब जी, आपने ChatGPT यूज किया है क्या? सर। सर आकाश बोल रहा हूँ। आकाश जी, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था तो मैं सुना नहीं सर, लास्ट में क्या बोला आपने। ओके, मैं बोल रहा था ये जो बैच चल रहा है ये अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। ओके, बाकी जी। रही बात, जो भी आपको नेम मिलेंगे थोड़े बहुत टॉपिक्स के हेडलाइन बदल गए होंगे, अदरवाइज इंटरनल कंटेंट सबके सेम है। ओके, और एलिमेंट 4 में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लाइक जो 4.2 था वो 4.1 में आ गया, और जो 4.1 था वो 4.2 में चला गया। दैट्स ऑल, इतना ही चेंजेस हुआ है, उतना कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ नया लगे तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। हम्म, हाँ, आई विल मूव ऑन टू साकिब जी। साकिब, हाँ, आपके आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में थे, और हाँ मुझे सर वो कहीं ना कहीं फील हुआ आपने कोई AI टूल यूज किया है। क्या आपने ये कोई सब वो AI? सर सर। हाँ सर, वो थोड़ा समझने के लिए मैंने किया था सर वो। हम्म, समझने के लिए किया था, तो जब वहां से कॉपी करके डालने की क्या जरूरत है? कॉपी सर प्रॉपर नहीं होगा, सम पॉइंट्स होंगे। पता चल जाता है वो चीज। ओके, देख के, आंसर देख के पता चल जाता है, ऐसा मत कीजिए। ओके, ओके सर। अगर आपने कॉपी करके डाला है तो मत डालिए, आगे जाके माल प्रैक्टिस आ जाएंगे, देन उसके कंसिक्वेंस बहुत ही खराब हो जाता है। अगर अगर मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, माल प्रैक्टिस सबसे बड़ा थ्रेट है IGC में, क्योंकि निबोस आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो उनका जो भी कंसिक्वेंस वो देते हैं बहुत बेकार होता है। जैसे कि माल प्रैक्टिस के कंसिक्वेंस एक बार आपको फील करा देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आपने मार्च में एग्जाम दिया। ओके, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल गया, मई में रिजल्ट आया, आप माल प्रैक्टिस लगे, बाद में वो 2 महीना और लेंगे माल प्रैक्टिस का आउटपुट देने के लिए, और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि 2 महीने में आउटपुट मिलेगा। वो 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। इट मीन्स कितना बड़ा गैप हो जाएगा। अगर 1 साल बाद आ भी गया कि नहीं आपका पेपर हम वॉइड कर रहे हैं, अगर बैन कर दिया तो चलो गया, फिर आपका 3-4 साल गया, यानी कि निबोस भूल ही जाइए आप। अगर बैन नहीं किए, वॉइड भी किए, तो उसके लिए वापस 5 महीना एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, वो सब चीज। तो इसीलिए फेल हो जाना एक हद तक आप टॉलरेबल कह सकते हैं, माल प्रैक्टिस कंप्लीटली इनटॉलरेबल है। ओके, सो इसीलिए मैं वो आपको आपके AI टूल के चीज को देख के ही मैंने बताया आपको, अगर आप AI टूल यूज भी कर रहे हैं, यू शुड नॉट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल AI टूल यूज करना ही नहीं है। अगर किसी वजह से किसी स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मुझे मेहनत लग रहा है टाइप करने के लिए, इसीलिए आसान लगेगा आपको, वो बोलते हैं ना एक आपको फील होगा नहीं यार कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, मत कीजिए। डायरेक्ट फेल, बैन कर देते हैं वो, कंसिक्वेंस बहुत ही बेकार है। ओके, सो डोंट डू दैट। ओके,
इट्स नॉट फॉर सकीब जी ओनली, इट्स फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए है वो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए है, नॉट फॉर सकीब सकीब जी ओनली। ओके। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं थे, मैंने आज लैपटॉप बैक कर लिया। सर सर ये पूछ रहा था कि सर असाइनमेंट अभी जो टोटल बने, एक दिन मैंने अब्सेंट भी किया था क्लास में, तो सर मुझे पता चल सकता है क्या कि टोटल अभी कितने असाइनमेंट हो चुके हैं? बिल्कुल, आप क्लास वर्क में जाइए, डेली टास्क पे देखिए, वहां पे सारे असाइनमेंट दिए हुए हैं। ओके। सर अगर जितने भी अब मेरे असाइनमेंट छूटे हुए हैं लैपटॉप ना रहने की वजह से, वो क्लास वर्क में सर असाइनमेंट शो करेगा कितने कंप्लीट करने हैं? जी जी, वो सब दिखेगा। ओके। थैंक यू सर, मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने भी अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, थोड़ा लेट सबमिट किया है, बट ओके, तो सबमिट किया है वो। मैं बाय बाय आई विल ट्राई कि बिफोर टुमारो, कल क्लास से पहले मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके। यस, कोई कुछ पूछ रहे हैं? ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। So today we will have a we will learn about element one, element two. Okay, which is on what is a formal health and safety, like what is health and safety management system. Okay, how health and safety management system work and what they look like, and what are the benefits. What are the okay health and safety management system होता क्या है? When what benefits they bring. अगर आपके पास health and safety management system है, उससे क्या benefit होता है? That will cover your no. So here in 2.1, basically we will cover the document of ISO 45001 2018. Okay, how the PDC cycle works. It's aligned with ISO 45001 2018, ILO versus 2001. Okay, and along with that, we'll learn about the benefits of having formal or certified health and safety management system and informal health and safety management system, how it works, and what are the benefits and limitations of those. फॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और इनफॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे एक बेसिक सा फर्क बता दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन a reputed company, okay, like for example, like you are working in a construction company, okay, so there for managing health and safety आप risk assessment बनाते हैं, right? You are conducting the audits, you are issuing the permit to work system, you are issuing a JSF. At the same time, if you go to a cafe, एक छोटा सा कैफे, लाइक फॉर एग्जांपल डॉली चाय वाला फॉर एग्जांपल, ओके, तो क्या वहां पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा? वो लाइक फॉर एग्जांपल वो एक छोटा सा टपरी, वो क्या बोलेंगे आपके उनके वर्कर के सेफ्टी के लिए, दे विल जस्ट वर्बली से कि वर्कर्स को क्या करता है भाई, स्टोव जब बना रहे हैं, ओके, रॉकेल जहाँ जहाँ पे आप केरोसिन रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग केरोसिन, तो जहाँ पे केरोसिन रख रहे हैं वहां पे आपने आना, जस्ट गिव सम वर्बल इंस्ट्रक्शन, राइट? दे आर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। आप घर पे भी बात करें तो अगर कोई छोटा बच्चा है, ओके, अब साइट पे जब इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी की बात की जाती है, वहां पे आप क्या करते हैं? ऑन साइट या प्रिपेयरिंग एजेस है, आप वहां पे साइनेजेस देते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। क्या सेम चीज आप घर पे करते हैं? नहीं ना। आप घर पे बस बच्चों को बोलते हैं नहीं, जब हाथ गीला हो तो छूना नहीं है बोर्ड को, राइट? पावर अगर कुछ काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो चप्पल पहन के जाइए। यह कोई रिटर्न नहीं होता, या वर्बली गिविंग है, बट हियर एज वेल या मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, दैट आल्सो या मैनेजिंग। So that's the difference between formal health and safety management system and informal health and safety management system. Okay. So आगे बढ़ेंगे तो we'll get the better clarity on it. So first let's say the PDCA cycle. Okay. So is there anyone in our team who knows about this PDCA cycle? Please raise your hand.
कोई है हमारे बीच जिनको पीडीसी साइकिल के बारे में क्लैरिटीज हो? हम्म। कौन? रमन जी, प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. PDCA actually stand for Plan, Do, Check Act. In PDCA, we first plan that what is going to be done and do that how to be done and act, check for improvement, check for what is the lagging and leading, and act for improvement. So PDCA stand for it. Plan, Do, Check Act. Would you able to elaborate this plan? What is plan phase? What is do phase? What is check phase? What is act phase? Huh? In plan phase, we are planning to what is going to be done Okay. and do and in do phase we are planning how this is to be done. Okay. Yeah, and check that what resources required and what is missing in check. And act phase we are acting for improvement, like what and review and improvement, like monitoring and reviewing. Okay. Anyone else? Yes, sir. Can सर I? इट इज Yes. Please, Okay, Minoj, Akash, you can. Minoj जी प्लीज करते हैं. Everybody, please आप hand raise करके रखिए so that I can get back to you. Okay. The plan basically plan includes the planning of the procedures, planning of the policies, planning of how to do the work, planning of the aims, targets. That will comes under the plan. Even planning of the resources, that is also part of plan. Once the plan has been completed, then execution will be a type of do work. When actually the based on the planning, based on the roadmap, the work has been started. Whatever the procedure has been identified in a planning, the same thing has been executed, which will be covered in the do part. Once the working is started, the work is already started, then again to verify that work, whether it is going as per the procedure, as per the plan, as per the resources are consumption or not, that all things are comes under the check. Once we will do the check, whatever the gaps we will identified, that gaps can be breached, that will comes under the act. So that way the PDCA cycle will continue every time. And one by one, once we complete the PD cycles, again we will start with the same. So after one and another project, it will be continue like that. Okay. Thank you so much. Who else is there? Akash ji, you are trying to elaborate, no? Yeah, please. yes sir. Sir, PDCA cycle is a simple repeatable method for continuous improvement, sir. Okay. All right. So, would you able to elaborate this PDCA cycle? No? Okay, fine. Anyone else? I just want to try, sir. Yeah, please go for it. So PDCA cycle is that, as Akash have said, it's a continuous process in which first we have to plan whatever which we have to do. We have to plan accordingly. Just like for example, risk assessment is there. We plan with the executing team that we sit on a table. We look for whatever the risk assessment we will go through for about that one to execute that work. After planning, we will execute that work on the ground, which we will go as according to our risk assessment. While executing that work, PDC, we will check that we are on the track or we are doing whatever the things which we are doing that is according to the plan which we have planned in the first. If there is an issue or is there, we will cover that one in act, and again we will plan for whatever the if there is missing is there, we will again come back to a planning desk. We will again plan and again execute for that one. So it's a complete cycle for that one. Okay. Anyone else? Okay, fine. So PDCA cycle, as you all know, your basics are clear on PDCA cycle. Okay, but when it comes to health and Sir, good safety evening. management, Yeah. yes, sir, good evening.
या प्लीज गौरव जी, सर आवाज जा रही है, नेटवर्क इशू है बोलिए बोलिए। सर। हाँ, यस सर, यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, और ये इस वजह से मैं थोड़ा सा ये हो जा रहा हूँ। ओके अभी सिस्टम अपनी सिस्टम पे भी नहीं आ पा रहा है, तो ये अभी वो मेंटेन करेगा, वाईफाई भी यहाँ ये हो गया है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरी आवाज जा रही है सर? हम्म, हाँ, आ रही है यस। सर प्लीज। ओके, ठीक। So can you move forward? यस सर, यस सर, यस, यस, वो फॉरवर्ड सर। Thank you so much. Yeah. So if you say the basics of this PDCA cycle, as we all discussed, the plan stands for plan phase, do stands for do, implement your plan, C stands for check and monitor, yeah, and A stands for act. So how it works, like for example, let's take assume that contractor management. We all have discussed about contractor management in our yesterday's class, right? So if you see contractor management, when you are selecting, you are planning to recruit the contractor, what we did, first we conduct a risk assessment of our workplace, right? अपने risk assessment क्या, you have identified the potential hazards, yeah. And based on the risk assessment, okay, and based on the legal requirement, yeah. For example, if I'm following ISO 45001 standard, so I will check like the hazards or the risk we have identified at the workplace is for requirement of ISO 45001 2018. Do I provided adequate measures? Do I implemented adequate control measure to eliminate or to prevent any kind of occupational incident at workplace? Okay. So based on risk assessment legal requirement, we prepare a plan considering our hazard, what type of precautions we may need, what expertise we may expect from a contractor while we are recruiting them. राइट, सो आप जब प्लान फेज में प्लान बनाते हैं, देयर यू डिसाइड कि हमारा जो पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई किया, हमारे जो लीगल गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें क्या कंट्रोल मेजर, क्या रिसोर्सेज चाहिए। देन आफ्टर प्लानिंग फॉर इट, वी डू इम्प्लीमेंट इट, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट प्लान्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन योर प्लान फेज। ओके, प्लान फेज में आपने क्या किया, लीगल रिक्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट कंसीडर करते हुए डिसाइड किया, प्लान फेज किया, जिसके बेस पे आपने एक पॉलिसी बनाया खुद का। Okay, you have established your own standard, and to fulfill your standards, you implement you have implemented your recommendation or arrangements in the plan. जैसे कि इन प्लान फेज we have decided कि हमें जो है एक ऑडिटर चाहिए who must have 5 years experience, okay, who must have so and so, like वो lead auditing certified होने चाहिए, experienced होने चाहिए। So based on that, we move on in do phase. What we did, we conduct an interview, we recruited an auditor. इंटू फेज आप क्या करते हैं, जो डिसाइड किया प्लान फेज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ यस सर। इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। देन इन चेक फेज, what you do, you monitor the resources we have provided, right? For example, we have allocated an auditor. After appointing that auditor, are we getting enough outcome based on our requirements? That you monitor. Okay. Then in your monitoring, you'll get two outcomes. Either everything is going good or there is some gaps in a management system. So based on that, you react on it. If there is any gap, you should work on improvement. If there is any if everything is going okay, what else we can do to make it better? You should react on it. Then again, based on that, again we'll plan, again we will do, again we will check, and this cycle is continue. Okay. So this cycle is it helps in continuous improvement phase. Okay. यस सर। So here, what is PDCA plan? It's about establish the standard. Okay. Establish the standard of health and safety management system based on the risk assessment and legal requirement. Implement plans to achieve the objectives, aims, or standard. Okay. Check and measure the progress with the plan and compliance with the standard. And act like review the acts, review against objectives and standard.
and take appropriate actions. Okay? Yes. So the key elements of health and safety management system, which is defined in ILO versus 2001 safety management system. Okay. So it's like during while you're managing health and safety, these are the specific arrangements you should consider. Okay. So which all these things get monitored in your auditing, जो कि आपके audit के दौरान monitor किए जाते हैं. First आते हैं ये policy. What is policy? Policy is basically the foundation stone of an organization. पॉलिसी एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने कमिटमेंट मेंशन करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए they check like they give their commitments. Okay, like we are committed to prevent incident rate. We are committed to provide safe workplace. We are committed to investigate the accidents. It's a huge document. Okay, if you have the policy, you can check that. ये बहुत ही बड़ा document होता है. And in organizing phase, you organize like what are the things, what resources we require to fulfill the commitments we have given in the policy. Policy में जो आपने commitments दिया है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आप ऑर्गेनाइजिंग फेज में इंप्लीमेंट करते हैं. एंड इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ओके, यू ऑर्गेनाइज देम, देन प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, देन मेजर द परफॉर्मेंस थ्रू एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. ओके, मैं आपको छोटा सा क्लूज दे दूं अबाउट एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग. एक्टिव मॉनिटरिंग सेज अबाउट द मॉनिटरिंग प्रोसेस you implement to prevent any accident or incident at workplace is active monitoring. And reactive monitoring is the monitoring measure you implement post accident or incident to prevent reoccurrence of accident or incident is known as your reactive monitoring. Okay, and performance monitoring is a mode of monitoring where you monitor the outcomes of both reactive monitoring in certain interval. ओके, हर एक हायरार्की पे, हर एक मैनेजमेंट लेवल पे आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, लाइक मंथली बाय द इंटरनल टीम शिफ्ट मैनेजर्स, क्वार्टरली बाय द मिडिल मैनेजर्स, ईयरली बाय द टॉप मैनेजमेंट. ओके, इसके बारे में हम जब एलिमेंट 2.2 पढ़ेंगे वहां पे और थोड़ा एलाबोरेटेड में, इवन एलिमेंट 4.4 अगर आप अभी चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं. ओके, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग एलिमेंट 4 में कंप्लीट है. ओके, एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस like based on the outcomes of the monitoring you do. So first, what is policy? Policy is a plan phase. Okay, clear statement and commitment towards health and safety by the organization. Okay, it sets occupational safety and the health targets, aims and objectives of the organization. Okay, and policy will be only effective if we engage workers in while preparing the policy. If you are consulting with the workers while prepare and making participation of the workers, because why we supposed to make workers to be participated in while preparing the policy, because they have more exposure as compared to common worker, as compared to top management, right? आपको सबसे ज्यादा एक्चुअल आउटपुट कौन दे पाएगा ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को लेकर? वर्कर्स, राइट? सो फॉर दैट रीजन बिफोर फाइनलाइजिंग योर पॉलिसी, okay, we should consult with the workers. Then organizing, the employees should have a framework for overall roles and responsibility for the protection of the workers' health and safety. Like provide leadership at all level of health and safety activities, allocating responsibility, accountability, competence, training, occupational health and safety management system documents, effective communications. In organizing phase, we should ensure it. Okay, जो भी आपने कमिटमेंट दिया उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? Okay, that we have to define in the policy. And we should ensure that competence and train provide, you should ensure adequate documentations are there. Okay, then communication, effective communication on health and safety management system. Then do phase, the organization existing health and safety management system and relevant arrangements should be accessed by initial review, like detailed arrangement to manage health and safety. So management system should have arrangements like safety plan, development, implementations, occupational health and safety objectives need to be defined, risk assessment, hazard prevention. Okay, control measures need to be there, emergency preparedness and response, management of changes, procurement and contracting. Okay, all these things need to be well planned and well implemented. Okay,
So, the planning and development is clear. Health and safety objectives about targets of the organization. In general, objectives में क्या होता है जैसे कि we will achieve zero accident incident rate. Every year, organization set their own objective. Okay, जैसे कि last year मेरा accident turnover rate high था. So this time we should aim to reduce it. Currently जो भी ratio है हमारा. Okay. Risk assessment. Those who do, I think I have already defined about the risk assessment, right? Risk assessment is a process where we identify the workplace hazards and measure the effectiveness of current control measure, then recommend control actions. That's the process, okay, which is known as the risk assessment. Hazard preventive measures, okay. Control measures need to be there in arrangement section. Emergency preparedness and response regarding your safety assembling point, a team for the evacuation and other remaining arrangements to safe evacuation of the workers. And management of changes. What is management of changes? Management of changes, it says about if there is any changes related to your work layout, related to your project, related to your workforce, कोई भी changes होता है minor to major, in all the changes, all these changes need to be managed effectively. Okay, उसको मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस बोला जाता है. जैसे कि आपके पास एक पुराना एफएलटी था, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कि हमारे एफएलटी सिनारियो ले लीजिए. ओके, एफएलटी सिनारियो में हमने देखा एफएलटी से ऑयल लीकेज हो रहा था. सो व्हाट वी डिड, वी रिप्लेस द न्यू एफएल ओल्ड एफएलटी विद अ न्यू वन. हमने नया एफएलटी इंट्रोड्यूस करवा दिया. तो क्या हम डायरेक्ट एफएलटी साइट पे डिप्लॉय कर देंगे? ये लीजिए नया एफएलटी, चाबी दे दिया? नो ना. Before deploying new FLT, what you do, suppose like हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, नया FLT आया, उसमें कुछ नए टेक्निकल अरेंजमेंट्स होंगे, राइट, उसमें कुछ नए इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके लिए भी कुछ नया स्पेस हमें चाहिए रहेगा. तो उसके रिगार्डिंग पहले हम खुद समझते हैं एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, अब खुद समझते हैं कि क्या नए अपडेट्स क्या है, उससे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं. अभी के जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो तो कम्प्लीटली बहुत ही कम साउंड आते हैं, राइट, तो अलर्टनेस कम रहेगा लोगों को रिगार्डिंग द एफएलटी. तो हम क्या करते हैं, लोगों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं. ओके, बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट हम एसओपी डिफाइन कराते हैं, उसके लिए सेफ एक्सेस डिफाइन कराते हैं. सो ये जो बदलाव कराते हैं जब आपका, ओके, जब आपका चेंजेस होता है, ये जो बदलाव आप कराते हैं उसको हम मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस कहते हैं. ओके, लाइक जो बदलाव हुआ उसको मैनेज करना. अगर हम ये मैनेज नहीं करते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे. एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट बढ़ेंगे, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, बहुत सारे कंसिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा इसके लेकर, जो कि हमारे, आप अगर चाहें तो मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस के लिए एलिमेंट 3.5 आपका है, उसको गो थ्रू कर देंगे. ये कंप्लीट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस को लेकर. ओके, आप सेल्फ गो थ्रू कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा. दैट्स नॉट ए बिग टेक. 5-10 मिनट लगेगा, सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो आराम से समझ जाएंगे. ओके, अदरवाइज हम आगे तो गड़बड़ करने ही वाले हैं. देन प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, देन आते हैं चेक, measuring and monitoring, evaluating the procedure, monitor and measures and record the health and safety management performance on regular basis. Like evaluating the procedure, it should be developed, established to periodically review health and safety management system. Example, proactive monitoring, reactive monitoring, performance monitoring, right? So responsibility, accountability and authority for monitoring at different level in the management structure should be allocated for investigation of the work-related injuries, ill health, diseases, incident, and their impact on health and safety performance. Okay. Then action for the improvement. Okay, arrangements should be established and remain maintained for any shortcoming, deficiencies on health and safety management system, and how to take preventive and corrective actions. So action for action for improvement, emphasize on improvement by performance monitoring, by measurements, auditing, management review. Okay, these are the way we can work on continuous improvement. And your auditing is a completely independent, critical and systematic review of occupational health and safety management system. So auditing basically include arrangement to conduct periodic audits that are to be established to determine whether health and safety management system and its elements are in place and adequate, effective in protecting the health and safety of the workers to prevent the incidents, identifying and analyze the root cause of any nonconformities,
with relevant to occupational safety and health regulations. ओके, ऑडिट एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्रोसेस है जहाँ पे हमने जो भी जो भी मैनेजमेंट सिस्टम के एस्पेक्ट्स देखे उन सबको इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है। ओके, कमलकांत जी, सॉरी, कमलकांत विश्वकर्मा जी, हैव रेज्ड हैंड प्लीज। सर इसको थोड़ा हिंदी में थोड़ा समझाइए ना। हाँ जी, थोड़ा हिंदी में सर इसको थोड़ा। किसको, ऑडिटिंग को? हाँ हाँ जरूर। ओके, ऑडिटिंग बेसिकली एक डेप्थ एनालिसिस है ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। अभी जैसे कि आपने पढ़ा पॉलिसी के बारे में पढ़ा, राइट, आपने इम्प्लीमेंटेशन, अरेंजमेंट, ये इन सब फेज में आप जो भी काम करते हैं उसको इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है कि जो करंट स्टैंडर्ड है, जैसे कि हमने बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट हो गया, ओके, बीओसीडब्ल्यू एक्ट हो गया इंडिया के लिए। अब जब हम डिवोर्स के सिलेबस पढ़ रहे हैं, ISO 45001 2018 हो गया, तो उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या हमारा जो पॉलिसी हमने बनाया है, क्या वो उसके एक्सपेक्टेशंस को मेट कर रहा है, वो इन डेप्थ ऑन ग्राउंड इवैल्यूएट किया जाता है। ऑडिटर आएंगे, ओके, जो कि इंडिविजुअल होता है, ऑडिटर्स किसी के ऊपर भी बायस्ड नहीं होते, उनका स्ट्रेट रिव्यू होता है। वो डेप्थ एनालिसिस करते हैं, करंट स्टैंडर्ड अपडेट्स क्या है, मार्केट में करंट क्या अपडेटेड आया, क्या अपडेट्स आए। जैसे कि मैंने कल जब आपको आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे थे, ओके, कल जब हमने आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन जब आप देख रहे थे, आप जब गूगल में सर्च करेंगे आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन, उसके दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ओके, एक रिवाइज्ड मिलेगा, एक ओल्ड मिलेगा। लाइक आई थिंक एक जो 22 से पहले का मिलेगा, एक 20, सॉरी 22 नहीं, 23rd या 4th से 2024 से पहले का एक कोड ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, और अभी का एक रिसेंट रिवाइज्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। तो जो ऑडिटर रहेंगे वो क्या करेंगे, जो रिवाइज्ड अपडेट है उसके बेस पे आप क्राइटेरिया को मेट कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज को एक्सेस करेंगे। मतलब ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नया वाला जो अपडेट आया है। राइट, इन इन डेप्थ होता है ये। इट्स नॉट लाइक कि ऊपर ऊपर से देख लिया आगे प्रोसीड कर लिया, नहीं, इन डेप्थ इसका एनालिसिस होते हैं, और इसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं जो कि हम जब एलिमेंट 4.3 डिस्कस करेंगे वहां पे ऑडिटिंग का कंप्लीट प्रोसेस है, वहां पे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड फॉर योर रेफरेंस, आप अगर चाहें तो एलिमेंट 4.3 खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ओके, टू एनहांस योर नॉलेज ऑन, ओके ओके। सर। ओके। So, the framework is for ISO 45001 2018. Okay, this framework represent how health and safety management system works. Okay, is aligned with ISO 45001 2018. Okay. So, for example, if you are preparing a health and safety management system design कर रहे हैं for a new organization or a existing organizations, okay, certain factors we need to consider. ओके, अगर आप लोग देखेंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने रिसोर्सेज का डॉक्यूमेंट दिया है, इट हैज द डॉक्यूमेंट ISO 45001 2018 का डॉक्यूमेंट है वहां पे, ओके। अदरवाइज शेयर कर लेता हूँ आपके ग्रुप पे। ये जो आगे हम जो भी बनने वाले हैं ISO 45001 2018 को लेकर, वो पार्शियली ISO 45001 2018 के डॉक्यूमेंट से ही लिया लिया हुआ है, ओके। जो भी चीजें आपको आते हैं, okay? और जो भी मैं एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज की बात कर रहा हूँ, हम 45001 इटसेल्फ बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको इन डेप्थ हम नहीं जा सकते करेंटली, ओके। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद से एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, ओके, टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ऐसा कंटेक्स्ट तो आपको बेटर क्लैरिटी ना मिले तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप गो थ्रू कर लेना, ओके। मैं एक बार ओपन करा के भी दिखा दूंगा, ओके, आफ्टर वी कवर ऑन दिस। सो when you are designing a health and safety management system for any organizations, okay, first what we consider, context of the organization. Like हमारे यहाँ पे जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, उसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं? एक्सटर्नल इश्यूज अबाउट आप जिस जगह पे लोकेटेड है उसके इम्पैक्ट, जो कि आपके ऑपरेशंस के पार्ट नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट आपके ऑपरेशंस के ऊपर रहेगा।
जैसे कि कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आ गया किसी लोकेलिटी में है, कोई नया रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो गया, वो आपकी किसी चीज को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। जैसे कि आपका बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आ गए, वो अपना रैली लेके आए आपके साइड पे, वो हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो गया। मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया, नए कंपटीटर आ गए मार्केट में आपके, वो नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप भी बाउंड हो जाएंगे कि आप भी वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। राइट, और भी बहुत सारे बिजनेस डिमांड्स हो गए। ये सारे एक्सटर्नल इश्यूज है जो जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर मैनेजिंग योर कंसर्न। देन इंटरनल इश्यूज इट्स डेफिनेटली योर इंटरनल वर्कर्स। राइट, आपका जो इंटरनल टीम है उनको क्या इश्यूज है, उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी, जिनको कि हम स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। ओके, आपके वर्कर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्कर्स का क्या जनरल एक्सपेक्टेशन है कि मैं सही सेफली काम करूं, सही से जाऊं, मेरा सैलरी मुझे टाइम पे मिले। ओके, कंपनी के काम के वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। ओके, देन अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन आ जाते हैं, आपके वेंडर, आपके सप्लायर। अगर इन जनरिक हम बोलने जाए, हमारे सप्लायर का क्या एक्सपेक्टेशन है, चलो मेरा माल जा रहा है, कंपनी अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, तो मैं जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, मुझे उसका पेमेंट तो मिल ही जाएगा क्योंकि उनका ऑपरेशन चल रहा है। अगर वहीं आपका एक्सीडेंट इंसिडेंट हो रहा है तो आपका जो सप्लायर होगा वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इसका तो कंपनी नहीं चल रहा है सही से, तो मुझे कैसे पेमेंट करेगा। सेम विद योर परचेजर, जो कस्टमर्स आपके होंगे उनके ऊपर भी वही इम्पैक्ट रहेगा। सो उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिजाइन द स्कोप ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक जिसको कि हम बोलते हैं हमारा पॉलिसी, हम उसके बेस पे डिजाइन करते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या चीजों के ऊपर काम करना है, दैट वी डिफाइन बेस्ड ऑन this external internal issues and expectation of the workers and other interested parties, which is defined in your clause number 4.3 and 4.4. Okay, and based on that, first we do plan for the work. Okay, work plan कराते हैं, where again जैसे कि हमने पहले पढ़ा in clause number 6, like we consider legal requirement, we consider a risk assessment. Based on that, okay, we decide, we prepare a plan. Okay, and based on that, we do implement the plan by providing supports or operational control. So in support system, which include like in the form of manpower, in the form of equipment and machinery. In operational control, it's about the documentation of controlling the documented information. Okay, that will come under operational part. Okay, then after implementing, which is defined in clause number 7 and clause number 8. Then based on it, after implementing all these resources, we check, okay, we continuously monitor the effectiveness of the supports or operational controls you have already provided. Okay, then based on the gaps or scope of improvements required, we we act on it, which is on a clause number 8, continuous improvement, and this is how this cycle is moves on. And everything will work effectively if there is leadership and workers participation. अगर leadership नहीं है, adequate workers participation नहीं है, you will not get the intended outcome of health and safety management system. Okay, so to get the intended outcome of health and safety management system, all these things will work smoothly. Okay, is it clear? The framework is clear to you all, right? क्या clear है? Let me elaborate seminar documentation. So if you see, in ISO 45001 2018, in general, we have 10 clauses. Okay, 10 clauses. Clause number 1 is about scope of this health and safety management system, this document. Okay. If you see clause number 2 says about the normative reference. Normative reference क्या है? It is about
क्या ISO 45001 2018 जो है किसी अदर डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड है? तो द आंसर इज नो। ISO 45001 2018 ये किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। So ISO 45001 2018 itself is a unique document. Next, terms and condition. Okay, terms and condition here you'll get to know. Okay, like different terms जैसे कि workers का definitions क्या है, interested parties का definition क्या है, stakeholder का definitions क्या है, consultation का definition क्या है, workplace का definitions क्या है. Okay, different terms जो यहाँ पे use हो रहे हैं उसको define किया गया. Then in context of the organization, which is in clause number 4, 4.1 is about understanding organizations and in context, understanding needs and expectation of the workers and interested parties, determine scope of health and safety management system. Clause number 4.4 is about occupational health and safety management system, how it works. Clause number 5 define क्या है about leadership and workers participation, जिसमें कि 5.1 says about leadership and commitment, 5.2 your policy, 5.3 organizational roles, responsibilities, and authorities. Then 5.4 it says about consultation and participation of the workers. Why we require to consult workers on health and safety management system. And clause number 6 is about planning phase, जो कि आपके प्लान के पार्ट होते हैं. Actions to address the risk and opportunity, hazard identification, risk assessment and opportunity. Okay, determine legal requirement and other requirement, and plan of actions. 6.2 is about health and safety objectives, plan to achieve the objective. Then clause number 7 and 8 जो कि आते हैं आपके डू फेज में. Okay, it's about resource allocation, hiring competent people, awareness, communicating health and safety information internally or externally. Okay, preparing documented information, creating and updating them. Operational control की बात करें, eliminate the hazard or reduce occupational health and safety risk, management of changes, procurement of the resources, emergency preparedness and response. These are the part of the operational control. Then clause number 9 says about performance evaluation, which is on your check phase. Okay, like monitoring, measuring, analyzing the performance through internal audit, through active monitoring, reactive monitoring. Okay. Then clause number 10 is about continuous improvement, incident non-conformity, corrective action, working on continuous improvement. Okay. So I will request you all कि आप जो है इसको एक बार go through कर लेंगे इस documents को to understand all these clauses in detail. Okay. फिलहाल हमारे टॉपिक में read only some few generic things. Okay, based on current syllabus requirement. Otherwise, a part of it आप लोग इस स्टैंडर्ड को एक बार go through कर लेंगे. Okay. सर हाँ जी. सर हाँ बोलिए सर. सर इसका लिंक सर इसका लिंक जो है ना थोड़ा एक बार व्हाट्सएप में शेयर कर देना है. I will share it on your WhatsApp. Okay, मिल जाएगा. ओके सर. Hope it is clear to you all about regarding the framework. Huh? Yes, sir, it's clear, sir. So first is context of the organization, clause number 4, which is about its understanding of the organization in its context, like organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affecting ability to achieve the intended outcome of health and safety management system. Understanding the context of organization is used to establish, like implement, maintain, and continual improvement in health and safety management system. Okay, so here are the common external internal issues. External issues की बात करें, the culture, political, economical, legal issues, nature surrounding and market competition, new competitor, technology, laws and occupation. When you say about internal context of the issue, internal issues, like internal context issues like organization की culture structure की बात की जा रही, roles and accountability, capabilities and culture of the organization, information system we have, follow-ups and decision making. Okay.
Then clause number 5 is on leadership. Top management shall demonstrate the leadership and commitment with respect to health and safety management system by taking overall responsibility, accountability for all work, okay, prevention of the all work related incidents like injuries and illness, as well as provision of safe and healthy workplace and activities, and ensuring that health and safety policies related to health and safety objectives have been established compatible with the strategic direction of the organization. Must ensure that resources needed to establish, implement, maintain, and improve health and safety management systems are available. Communicating importance of effective health and safety management system, conforming health and safety management system requirements, and ensuring the health and safety management system is achieving its intended outcome of health and safety management system. Yeah, and directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of health and safety management system, ensure and promoting on continual improvement, supporting other relevant management roles and demonstrate the leadership, and it applies to the areas of responsibility, developing, leading, and promoting the culture in the organization. Okay, that support intended outcome of the health and safety management system. Protect work from reprisal when reporting incident, hazard, risk, and opportunities. Ensure that organization have been established and implemented a process of consultation and participation of the workers, supporting the establishment and functions of health and safety committees. Next is workers' consultation and participation. Here, the organization shall establish and implement and maintain a process for effective consultation of the worker at all levels, top to bottom, हर एक level पे. We should develop a plan कि कैसे हम who will represent the worker. Okay, in development, in planning, in implementation, performance evaluation, हर एक phase में in a health and safety management system, you should consult with the workers. You make sure the participation of the worker. Right? So emphasize the consultation of non-managerial workers in following way, like establishing a policy, assigning roles and responsibility, authority, and applications. That's how you can consult with the worker. Determining on how to fulfill the legal requirement and other requirements. Establishing health and safety objectives and planning to achieve them. Okay. So why it is important to consult with the workers? Okay, first of all, if you say about the core benefits, worker having more exposure, right? It will increase your productivity. Worker motivate होंगे तो आपका productivity increase होगा. Higher level of workforce motivation. Healthier and safer workplace मिलेगा. Better decisions towards health and safety. A strong commitment to implement decisions and actions. Greater cooperation and trust. Joint problem solving. Okay. So emphasize the participation of non-managerial workers in following way. Like determine the mechanism of the consultation and participation. Identifying the hazards, assessing the risk and opportunity. Determine effective actions to eliminate the hazard, reduce the risk. Determine requirement of the competence, like the training needs, trainings and evaluating the training. Determine what need to be communicated and how it will be done. Determine the control measure and their effective implementation and use. Investigating incident non-conformities and determine the corrective actions, okay, which is defined in clause number 5.4e of ISO 45001 2018. Then in clause number 6 in planning phase, okay, it is a planning of health and safety management system, risk and opportunity are determined and accessed. So based on the risk and opportunity, we set an objective. Here the organization develop process necessary to deliver intended result that is compliant with health and safety policy, like planning of risk assessment, planning of emergency procedure, planning to achieve the policy targets. Okay, these are the few examples of it. And in do phase, we ensure the allocation of the resources, competency in a support phase, awareness, communication externally or internally, preparing a documented information, creating, updating, and controlling the information. In operational support, if you say the plan and control of the process that need to be established, like use of procedure like SSOW or PTW implement करना, establish preventive and predictive maintenance and inspection, specification for procurement of the goods and services, application of the legal requirement, other requirement on manufacturer instruction for the equipment, providing engineering and administrative control, adaptation of work to the workers, emergency preparedness and response. Okay.
Then the check performance evaluation, part of organization monitor, measure, analyze. Does performance evaluation against the set policy objectives and targets. Example need to evaluation of the compliance, like audit externally or internally. Management review are also part of a check phase of the management system. Okay, then act in improvement part, result and output of the management review, corrective action on non-conformity, and other measures to be taken in order for continuous improvement of the performance of health and safety management system. The cycle again repeat in the term of assessment of the risk and opportunity, accordingly identify new or modify process or change in risk or opportunity. Okay, like incident, non-conformities, corrective actions, continuous improvement. Okay, this is how it works. Okay, is it clear to you all about the PDC cycle? Class number 1 to 10? No? Any questions please? अगर कोई question है तो hand raise कर सकते हैं. No? Okay, then we'll move forward. Okay, this is something new that have been introduced in the syllabus. Okay, about formal and informal health and safety management system. So, Let's see can I ask what a is. question? Yeah, please, Vishwajit ji. Who is the mostly responsible for the implementation of these policies in an organization or in a project? First of all, we have already discussed about roles and responsibility in element 1.2, right? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल किसका होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर सारी चीजें नहीं डाल सकते हैं. दे विल एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सबके कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन से होगा. किसी अकेले के ऊपर हम ये नहीं दे सकते. बट ये इंश्योर कौन करेंगे? डायरेक्टर और सीईओ. ओके, दे शुड इंश्योर वी हैव इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. उसके आगे बाकी आप सबकी रोल्स एंड जिम्मेदारियां आ जाती हैं. ओके. Okay, sir. And is there any responsibility of the client or of any organization if it's going through a project in क्लाइंट this? का खुद का क्लाइंट का खुद का पॉलिसी तो होता ही है ना. दे ऑलरेडी हैड द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. एज ए कॉन्ट्रैक्टर जब आप किसी क्लाइंट के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके पास सेफ्टी, उनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो तो कम्युनिकेट करेंगे ना आपके साथ. हमने कल वही तो पढ़ा कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के दौरान. आप साइट पे जाने से पहले आपका पॉलिसी एक्सचेंज होता है. आपके जितना एचएससी रिकॉर्ड्स है वो एक्सचेंज होता है. आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, राइट? Yes, sir. I got it. तो क्लाइंट के साइड के लिए क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है. आप काम कर रहे हैं क्लाइंट के साइड साथ में, तो आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जिस एनवायरमेंट जिस एरिया में आप काम करिए उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे. क्योंकि उसने तो परमिट देके आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया ना. आप जब ऑक्यूपाई कर रहे हैं उससे पहले आप इंश्योर करेंगे कि क्लाइंट हमें सेफली हैंड ओवर करे. उसके बाद आप काम शुरू करेंगे, राइट? Okay. नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? So formal health and safety management system basically is a structured, documented framework that systematically manage health and safety risks. Okay, when certified, it means the independent accreditation body has verified conformance to standards such as ISO 45001 2018. तो फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक बॉडी से सर्टिफाइड. ओके. While informal health and safety management system, an informal management system, it refers to health and safety arrangement that's not based on any formal standard, typically less documented. Okay, such systems are often built around legal compliance and business-specific risk control practices without any external certification. Okay, HSC knowledge that formal systems are not legally required and that smaller or low-risk business may manage the safety effectively without any ISO certification. जैसे कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, कोई छोटा चाय की टपरी है. ओके. कोई चाहे आप छोटे से कोई सिलाई का दुकान है, कोई राशन का दुकान है. ओके. दे आल्सो टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट? डिस्पाइट हैविंग नो सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, वो भी अपने साइड पे सेफ्टी इंश्योर करते हैं ना. भले ही वो आप रिटर्न में करते हैं, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो करते हैं वर्बली.
Okay, that's what the difference they have. So first, let's see the benefits of having formal or certified health and safety management system. So an effective and certified health and safety management system provide following benefit, like helps to prevent accident, injuries, fatality at workplace, increase the protection of the work, like comprehensive preventive approach, minimize the risk of production delay, provide a safe environment to do the business, demonstrate commitment of the management and effective health and safety policy leadership commitment, make organization more efficient, like operational maintain and meet legal requirement, other regulatory compliance, helps in improve staff morale, motivation by making workplace safer environment to work, helps to create health and safety culture, determine and reduce the threats and health and safety risk associated with the organization's operations. Okay, and mitigate the possible impact on the organization. Okay, it improve business reputation, increase opportunity to gain new business by competitive advantages to the organization, minimize the risk of downtime accident, cost saving होता है, provides a robust like straightforward system आपको देता है, helps in continuous improvement, focus on health and safety performance, positively influence the existing okay and potential customers and international benchmark, focus on participation of the workers and their involvement in health and safety management system. It reduces absenteeism and employee turnover rate. It helps in developing risk profiling and ensures stakeholder satisfaction. Okay. If you say about the limitations, क्या limitations होते हैं? High implementation और certification cost. Okay, जब आप audit कराते हैं तो ensure health and safety management system तो कभी कभी आपके लिए बहुत महंगा भी पड़ सकता है ऑडिट. Okay, increase documentation and bureaucracy, which may shift focus away from the practical risk control measure. Right? इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी हो जाते हैं तो आपके जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. रिस्क ऑफ पेपर कंप्लायंस, लाइक सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हम ऑन पेपर सारी चीजें सही दिखा दें जबकि ऑन ग्राउंड थिंग्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड. Resource intervention to maintain, like require dedicated time, persons, financial commitment, which may not always be possible to provide. Complex for small or low risk organization, where your systems become disappro- disappropriate, okay, disproportionate to the level of risk. Over reliance on documented procedure, which may reduce the flexibility. Requirement of strong leadership and sustainable commitments. Okay, like without which my system may exist only in the form of in a form, not in a practical form. Worker engagement may become superficial, like limit to formal consultation rather than meaningful involvement. Does not guarantee legal compliance or zero incident, like effective implementations and behavior remaining critical. Audit driven organizational culture, like where performance is measured by audit outcomes rather than real safety improvements. Okay, these are the limitations a formal health or certified health and safety management system है. देन आते हैं इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. उसके क्या बेनिफिट्स है, लिमिटेशंस है. व्हेन यू से अबाउट द बेनिफिट, प्रोपोर्शनेट टू लेवल ऑफ रिस्क, लाइक जो लो रिस्क एक्टिविटी है उसके लिए सुटेबल होता है. लोअर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लाइक आपको कोई एडिशनल रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, आपको किसी स्पेसिफिक ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ी, तो कम कॉस्ट में हो गया. सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस है. क्विकली अडेप्टेबल, अलाउ हेल्थ and safety control to be modified easily as work activity and condition change. Encourage direct workers engagement, supporting active involvement, discussion, TBT, day-to-day interaction. Allow immediate action for the safety issues, like without delay caused by formal approval process or documented change procedure. Well suited for small and micro level business where simple and critical system are more effective. Reduce the bureaucracy, like ensure focus remains on managing real risk rather than paperwork. Can still meet the legal health and safety requirement, like provide hazards that are identified, risks are assessed, appropriate control measures are implemented. Okay, these are the benefits of informal health and safety management system. If you say about the limitations, क्या limitations है इसका? Lack of structured framework,
inconsistent approach, application of health and safety controls, weak, okay, limited evidence of due diligence, weak monitoring and performance measurement, limited focus on continuous improvement, heavy reliance on individual competence and attitude, lack of formal health and safety management system, less suitable for high risk or complex operations, less suitable for high risk or complex operations. Okay. Lower confidence for external stakeholder like client, insurance, contractor. उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है इसको. रिस्क ऑफ लीगल नॉन कंप्लायंस ओवर द टाइम, हमेशा लीगल कंप्लायंस में रिस्क रहता है. ओके. इन योर इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. Is it clear to you all the limitations and benefits of formal health and safety management system and informal health and safety management system? Any questions, please? सर सर आकाश बोल रहा हूँ. हाँ सर जी. ये लिमिटेशन और जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये अपडेट होके आया है क्या? हाँ, अभी रिसेंट अपडेट है. मतलब जो मेरे पास जो नोट्स है उसमें तो ये दिख नहीं रहा, इसीलिए पूछा आपको. ये जो करंट अपडेट हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, आई थिंक आपको ये तो पता होगा, उसमें ये एडिशनल है. ठीक है. ओके सर. सर एक बार उसको कंफर्म कीजिएगा सर, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल एंड लो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन सर. Which one is? हाँ. कॉम्प्लेक्स फॉर द स्मॉल एंड लो हाई रिस्क. रिस्क, लेस सुइटेबल. जब आप सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन, ओके, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं उसमें वर्बल इंस्ट्रक्शन काफी होता है क्या? आपको अगर कोई केमिकल हैंडल करना है, ओके, उसके लिए कोई एसओपी आपने नहीं दिया, सिर्फ बोला ये दे केमिकल का कैन है उसको लेके आ जाओ. फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है, किसी छोटे बच्चे को बोल दिया जाओ वो लेके आ जाओ, बस उतना काफी होता है. उसके थ्रेड्स के बारे में बताएंगे, राइट पीपी पहनने के बारे में हम बताएंगे ना, व्हेन इट कम्स टू हैंडल ए हजार्डस केमिकल और टॉक्सिक केमिकल. राइट. कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, कोई मेन होल में काम हो रहा है, ओके, उसके लिए सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन काफी है क्या? नहीं ना, स्टैंडर्ड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, पीटीडब्ल्यू इश्यू करवाना चाहिए. राइट. ओके सर. तो वहां पे ये जो इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इनइफेक्टिव. ये सराज प्लीज. Sir, am I audible? यस यस. सर इनफॉर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन जनरली वर्बल या टीवीटी को भी आप इनफॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीवीटी को वो ऑन रिकॉर्ड रखते ही नहीं. ओके. भले जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, लेट्स टेक एग्जांपल, किसी भी तरह का एक छोटा सा ढाबा चल रहा है. ओके. ढाबे में ओके. ब्रीफिंग होता है शुरू में, ऑपरेशन यस. होने से पहले. डू दे मेंटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ इट? नो. नो, दे डोंट डू दैट. सो दैट देन देयर बिकम दैट टीवी, वहां पे टीवीटी तो हुआ, ब्रीफिंग तो हुआ, इंडक्शन भी हुआ, बट इट वाज नॉट इन रिकॉर्ड, तो वो हो गया इनफॉर्मल. अगर वही चीज वो ऑन रिकॉर्ड रखते, ओके, वो और ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके इंश्योर करते कि जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. राइट. गॉट इट सर, थैंक यू. आई थिंक मार्च में कुछ तो क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है. होपफुली मार्च में फॉर्मल इन्फो, मार्च या अप्रैल में फॉर्मल इनफॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चाहे 5 मार्क का आ सकता है कुछ. ओके. लाइक कोई ढाबे का या कोई छोटे से कैफेटेरिया ऐसा कुछ सिनारियो देंगे, वहां पे पूछ सकते हैं. ओके. थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस चीज को लेकर. ओके. दिस इज समथिंग न्यू. अगर मैं जब जब देखा IG1 में, ये एक सबसे कुछ, ये एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, अदरवाइज बाकी सब में वही आगे पीछे हुआ है पुराने सिलेबस के हिसाब से. ओके. सो फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू नाउ ना, you should read this clause. Okay. ये स्टेटमेंट देखेंगे which is defined to OB number 4 से aligned है. Understand arrangement in ISO 45001 2018. Understanding arrangements in ISO 45001 2018. Plan, do, check and act with.
ISO 45001 2018 incorporates the PDCA Act, okay, Plan to Check Act stages. Indicate which one of these states the following arrangement, like extract from the scenario belonging to. Note, you only need to select any 10 of the following arrangement. आप फिलहाल क्या करेंगे, सबके लिए करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिव मॉनिटरिंग ऑन बीएसए मींस यहाँ पे बोला गया है बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं थ्रू एक्टिव मॉनिटरिंग. इट विल कम अंडर प्लान, डू, चेक और एक्ट. किस स्टेज में आएगा ये? बताइए. It comes in Act, sir. एक्ट, Yeah. एक्टिव मॉनिटरिंग. एनीवन एल्स? Check. It come under do. Do? No. नो. Okay. एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किस में आएगा? It comes under check. चेक. Okay. नेक्स्ट, सेटिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव. It will come under check, okay. Active monitoring. Occupational health and safety objective being set by the organization. It will come under setting health and safety objective. Plan. Yes, plan. So like that only you have to identify बाकी सारे statement कौन से stage में आएंगे. And for that also, okay, for that you have to be with this ISO 45001 2018 document. तो आप लोग अभी क्या करेंगे, आई विल गिव यू, कल जैसे हमने केस स्टडी वाला पोस्ट किया था उसी तरह ये क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा अभी क्लासरूम में, ओके. एंड यू ऑल हैव टू सिंपली आइडेंटिफाई ए विल कम अंडर प्लान, बी विल कम अंडर डू, उसी तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे, ओके. लेट मी पोस्ट इट इन योर ग्रुप, देन आई विल. ओके, इफ यू सी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है. आपको सिंपली क्या करना है, यू शुड चेक कि आप लाइक क्या चीज, जैसे कि मैंने बोला जो ए है वो आपके चेक में आ रहा है तो सिंपली राइट ए ऑन चेक, बी विल कंसिडर अंडर प्लान, उसी तरह बाकी सबके भी आपको आइडेंटिफाई करके पोस्ट करना है, ओके. एंड आई विल एलोकेट यू ऑल 10 मिनट्स टाइम, 15 मिनट टाइम, लेट्स टेक 15 मिनट का वक्त लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए. विल यू ऑल एबल टू डू दैट? हाँ जी. और ISO 45001 2018 के डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपको लिखना है, ओके. शुड नॉट लाइक कि ऐसे ही कुछ एज्यूम करके डाल दिया, ओके. जैसे कि इफ आई लेट मी ओपन दिस ISO 45001 2018 डॉक्यूमेंट, कि उससे आप कैसे मैप करवाएंगे, ओके. ये क्वेश्चन रेयर आता है बट ये आता है, जब आता है तब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि 10 में से 10 आ जाए. जैसे कि हमने देखा प्लान एक्टिव मॉनिटरिंग लिखा था ना फर्स्ट वाला, मॉनिटरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, एक्टिव मॉनिटरिंग, राइट. सो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस किस में आ रहा है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्लॉज नंबर 9 विच विल कम अंडर योर चेक फेज, राइट. सेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव किस में आया? सेटिंग द पॉलिसी, व्हाट health and safety objectives here. Planning and achieving health and safety objective which is in your plan phase, right. उसी तरह you have to see the question, okay. You simply write it will come under plan, do, check or act, okay. So go for it. Your time starts now. You guys have 15 minute time, 15 मिनट का वक्त है. Everybody should complete it. अंश जी, गौरव राय जी, ज्ञानेश्वर, सकीब, यस शहनवाज, सर.
चिन्मय, मोहम्मद फैविल। प्लीज पार्टिसिपेट। सर क्वेश्चन क्या है सर? आपको सिंपली मेंशन करना है एक्टिव, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस एक्टिविटी को लेके आपके स्ट्रीम में डाला, गूगल क्लासरूम के स्ट्रीम में। ओके, आप चैट बॉक्स में डाल देंगे लाइक एक्टिव मॉनिटरिंग एज पर पीडीसी साइकिल, एक्टिव मॉनिटरिंग विल कम अंडर प्लान, डू, चेक और एक्ट। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? प्लान, राइट। उसी तरह आपको हाँ, सेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव विल कंसिडर अंडर प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये आपका डू में आएगा, तो सॉरी, ये चेक था ना, ये चेक में है, ये आपका प्लान में है ना। उसी तरह बाकी सबका भी करना है। हम्म, एंड अलाइन विथ ISO 45001 2018 डॉक्यूमेंट, उससे अलाइन करके करना है, ऐसे मत कर देना कुछ। तो एज्यूम करके मत लिखना। गो फॉर इट। सर आप वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे क्या, ILO वाला जो आप बता रहे हो? यस यस कर। क्या प्लीज चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप। क्या चैट में क्लिक नहीं हो पा रहा है? कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में, गूगल क्लासरूम में। आकाश जी आप सिर्फ चैट बॉक्स में करेंगे, बाकी सब कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट वो In Google Classroom, you have a comment box. You have to comment over there only. Open your Google Classroom. गूगल
Yeah, have you all done with it? Hmm. Okay, so let's see the actual output we can give you. So first let's see. Okay, are you all there? सब लोग हैं available? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. So first point is active monitoring, like conducting behavioral based safety audit. Okay, so it will come under check, right? You just cross check कि आपका आंसर इसके comparatively ठीक है कि नहीं. Okay. Next, setting health and safety objectives for whole site. It will come under your plan phase. Okay. Management review. Okay. The serious consequence of accident was got reviewed. Okay. ये किसमें आएगा? Check phase. नो सर एक्ट Revisit. में आ गए No. Consequence of the accident. सर ये we need to refer this ISO फाइल यहाँ पर मेंशन है Review accident consequence. It comes under Act. Incident. Okay. Okay. Improvement. Non-conformities and corrective actions. Yeah, it will come under your act. Revisit the risk assessment. ये प्लान हो गया. Revisiting risk assessment. Version It control again comes again Act. again under your act. Permit issued by a competent person. It will be a do. Yes. नो सर प्लान No. It will do. They are already implemented the permit. Issue कर दिया गया है already. Okay. Permit was already issued. Okay. Hazard ओके identification and understood by the permit issuer or the contractor. इसमें आएगा. Hazard identification is a plan of your part, na? Sorry, प्लान में plan. है. Part of your plan. Then internal communication, weekly feedback meeting have been conducted. Do. Do. Resources, provided resources for health and safety management system. Resource allocation again. Do. Plan. do Yeah. Version control of the documents. Careful control, like control of the documented information, like careful version control. Again. Do. Check. Do. Do. Managing incident. Investigation of the incident to identify the root cause. Act. Act of check. Please confirm. Act. I I Investigation. Investigation, incident, and non-conformity. सर चेक Wait.
क्लॉज नंबर 10 देखिए, एक्ट में आएगा, राइट? क्लॉज नंबर 10 इज एन एक्ट, इट act. If you see clause number 10.2, it says about organizations shall establish, implement, maintain a process including reporting, investigating, taking action to determine and manage incidents and nonconformities. Right? Yes, sir. Next, evaluation of the compliance through reporting and recording of accident. Check. Ajit? Comes under check, monitoring and measurement. check sir. Check. Yeah. Emergency rescue by the site emergency response team. Do. do Yeah, it's part of the. ओके, सिंपली ऐसे आंसर लिखना रहता है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जस्ट सिंपली राइट द कंडीशन, इट विल कम अंडर चेक फेज, इट विल कम अंडर प्लान फेज, उसी तरह ही लिखना है। 1 मार्क्स के रहते हैं टोटल, हर किसी में 1 मार्क मिल जाएगा, अगर करेक्टली आपने एलोकेट कर दिया तो मिल जाता है मार्क्स। ओके, ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार ही आ चुका है। ओके, इतना जब पहली बार ये जो फर्स्ट टाइम जब आया था 10 मार्क का था, उसके बाद सेकेंड टाइम जब आया था वो 4 मार्क या 5 मार्क ऐसा कुछ था। ओके, वेरी रेयर पॉसिबिलिटीज है इसके आने का। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक है टास्क नंबर 4 ऑफ एफएलडी सिनेरियो, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, कल हम ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? सर मेरा एक पॉइंट था, प्लीज। ये सी पार्ट मैनेजमेंट रिव्यू, हाउ इट कम्स अंडर एक्ट, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर? एक्सीडेंट एंड सीरियस कंसिक्वेंस। नहीं, मैनेजमेंट रिव्यू। हाँ, मैनेजमेंट रिव्यू, हाँ, एक्सीडेंट्स विद सीरियस कंसिक्वेंस। तो रिव्यू पार्ट तो सर उसमें चेक में आना चाहिए ना? दे आर डूइंग, वेट अ मिनट, Tara, this will comes under the act because whatever the planning doing we are doing and monitoring, after that again if there is some gap, that will be monitored by the management. Planning, doing and checking, whatever we are doing, all three aspects we are doing, and the outcome of that 3 aspects will be monitored by the management. That's why it's a part of continual improvement. Under which clause you have considered The that? act. कौन से क्लॉज के अंदर you guys have considered accident, like accident with serious review of accident with serious consequence to be considered under act, under which clause of ISO 45000, okay, do represent that? 10, वो थोड़ा clause number 10 is talking about the management review. okay, no, clause number 10 is about improvement. Okay, incident, non-conformity, corrective action. Sorry, clause number 8 or 9, if I'm not wrong. I have to just go and check. It's 9, right? 9.3 management review. So that's what मैं भी पहले चेक बोला था, you guys told me it will come under act on management review. Thank you Saraji to highlight it. Okay, it will come under check. Clause number 9 performance monitoring check में आ रहा है ना? Yes sir. Okay? Yes sir. So Saraji is right here. It will come under check. Okay. So ऐसे mistakes होने के chances भी ज्यादा है. So you should check. Minor चीज था. Okay. Clause number 9.3. Clause number 9 is a performance evaluation which will comes under the check page. So it will come under check. Next is for the next session, I will request you all कि OB number 1 पढ़ के आइएगा. Every OB number 1 पढ़ के आइएगा. There was a question to satisfy the expectation of the inspector. You have developed a formal health and safety management system that is aligned with ISO 45001:2008. So based on scenario only, what are the likely benefits to the organization of having a formal health and safety management system?
अगर फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो एविडेंस एक्सट्रैक्ट करके आइए, कल हम ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे इसके बेस पे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू एलिमेंट 2.2। प्रायर टू दैट एनी क्वेश्चंस? या एनी क्वेश्चंस ऑन इट प्लीज? सर उसको कल शेयर कर दीजिएगा, उसको हम कल रिव्यू कर सर लेंगे। OBE1 प्रैक्टिस मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, लाइक आप पढ़ के आएंगे तो कल टीम के साथ डिस्कशन होगा, टीम ड्राफ्ट करेंगे आंसर्स। ओके, ओके मैं नोटिफाई करा दूंगा इन क्लास सब, आई विल नोटिफाई दिस। So here we have done with element 2.1. Okay, now we'll move on to element 2. So your element 2.2 is about what good health and safety management look alike. Okay, so in the learning outcome we'll get here is about, we'll learn about the policy in detail. Okay, policy के implementations के बारे में पढ़ेंगे, the occupational health and safety policy under clause number 5.2 of ISO 45001, typical roles, content of the policy, proportionate to the needs of the organization. Okay, and the responsibility, हर एक individual का क्या responsibility है, so what are the responsibility they have towards the policy. Practical arrangement that's supposed to be there to meet the criteria of the policy. Okay, implementation of the SMART objective. Importance of stating organizational arrangement for the planning and organizing, controlling the hazard, consultation, communication, monitoring the compliance, assessing the effectiveness. Okay, and on what circumstances we may need to review the policy. कौन-कौन से circumstances में हमें policy को review करना चाहिए, that also will discuss it. Okay. So first, what is policy? Policy is basically, it says about intention or an direction of an organization as formally expressed by the top management. Okay, like policy, their importance. Okay, policy is basically the important written document. Okay, policy is the foundation stone of good health and safety management system in an organization. It set out the target aims for organization का क्या aim है उसको set करता है. It also helps in identifying who is responsible for achieving the targets. Okay, it states the aim that to be achieved, specific for each organization's requirement. Okay, policy allows them to be readily available, accessible for all the person. Okay, at their workplace, place to work. That also need to made available for the relevant interested parties, whichever is appropriate. So the purpose of a policy का क्या purpose होता है? So that is setting out health and safety policy to ensure everybody, each and every individual of the organization are aware of your aims, क्या targets है, क्या objectives है, उसको समझे. Okay, enhance the areas other than health and safety. There is effectiveness of personal development of the workforce. Business efficiency is improved throughout the operations. Involves of senior management in health and safety issue is evident to all stakeholders. Okay, so these are the purpose of a policy. Okay, so these are the three core sections of a policy. General statement of intent, which is your arrangement section. Okay, like it include which says about general क्या typical aims होना चाहिए organizations के. What should be the commitment, sign and date होते हैं आपके general statement of intent. In responsibility section, you'll have to appoint responsibility of who will be responsible for what action. Okay, and arrangement section, practical arrangement to be implemented in the policy. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. So general statement की बात करें, the characteristics of the general statement of intent, उसमें उस सेक्शन में क्या होता है? It's about the policy that need to be signed by the top management only, like director, MD या CEO. उन्हीं में से किसी का साइन होना चाहिए. Okay, कोई भी लोअर लेवल के मैनेजमेंट दे शुड नॉट साइन, उनका साइन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एमडीज या सीईओ या डायरेक्टर हो गए, दे आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी.
देन सेफ्टी एम्स आपके मेंशन होना चाहिए. Okay, to achieve zero accident rate, to meet the legal obligation, for monitoring the performance, effective communication and consultation with the workers. It should set the objectives to achieve the reduction in accident or ill health rate, to complete successful number of active monitoring activity, to achieve the standard. Okay. Okay. Next, who will sign the policy and why? So policy to be signed by the top management because they are ultimate responsible and accountable for all commitments that have been made towards health and safety. Next is why a date is required in the policy. Policy require a date because it tells us when the current statement was prepared and provide a reference point of view. So commonly क्या टारगेट होते हैं आपके पॉलिसी में? The common targets the policy has like reduce or achieve zero accident rate, reduce incident rate or fatal or major injuries or accident LL data, specific reduction in number of accident incident rate, zero prosecution, reduction in sickness rate and absenteeism rate. Okay, reduction in compensation claim, increase in improve or increase in reporting of near misses, dangerous occurrence, increase in number of workers trained in health and safety, special improvement in like specific improvement in audit, reduction in number of working days, LTIs के reduction होना, manage with safety work को increase करना, increase in safety observation, effective hazard and risk management system, health surveillance में improve होना, increase in frequency of periodic inspection, reduction in number of civil claims, no enforcement notice from the enforcement authority, achievement of nationally recognized health and safety management standards as per HSG 65 or ISO 45001 2008. Okay, so all these things need to be reviewed annually. जो पॉलिसी के जो भी टारगेट्स होते हैं वो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान मॉनिटर किए जाते हैं. अगेन ये जो मैंने टारगेट्स दिया ये जेनरिक है, इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है, इससे भी ज्यादा डिफाइंड डेटा हो सकते हैं. ओके, सो जब आप पॉलिसी सेट कर रहे हैं व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर, लाइक हु इज गोइंग टू सेट द पॉलिसी. मोस्टली आपके जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है दे टू सेट द पॉलिसी लाइक एमडी और सी. हाउ द ऑब्जेक्टिव इज सेट एट डिफरेंट फंक्शन लेवल. ओके, by giving personal target, legal requirement like legal standard like regulations, rules or act to be followed, technological option like availability of technology, okay, that available to meet the goal, financial operation, there should be no conflict between business requirement and financial requirement like your safety budget, hazard and risk assessment, it should be relevant to the organization's significant hazard and risk issues to be considered in the health and safety policy. Views of interested parties like consultation is very important, it should be discussed with the functional units. Okay, next part 2, responsibility for health and safety. Okay, in organization who will do what, list the name, position and role of the people in a business who have the specific responsibility for health and safety. Okay, when we have already discussed earlier in element 1.2 typically क्या role होता है each and every individuals का, right? Same things applies here, but again it vary organization to organization. Okay. Next part 3 is arrangement section. Somehow arrangement section जो है to achieve the aim. Okay, give a detailed practical arrangement you have in place, showing how you will achieve your health and safety policy. This should include, for example, doing your risk assessment, training employees using safety signs or equipment. Okay. So arrangement section of the policy, the following list commonly covers like accident and health reports, investigation procedure, emergency procedure, first aid arrangements and procedure. Okay, fire drill procedure, procedure undertaking risk assessment, control exposure of hazard, example noise, vibration, radiation, different hazards हो उसके लिए control measures, machinery safety, electrical equipment. ये document जो होता है arrangement section का, ये policy के document से एक बड़ा सा अलग document भी हो सकता है. Okay. Then maintenance procedure, PTW, requirement of specific PPs or special PP, monitoring procedure, procedure of control and safety of the contractor and visitor, provision of welfare facility, training procedure and arrangements, arrangements for consultation with the employee, terms of reference and constitution of the safety committee. Okay.
Next, while you're setting the policy, you need to ensure the SMART objective. So SMART objectives is stated with S stands for specific, like clearly defined and precise. M stands for measurable, towards a target and it should be quantified. A stands for it should be achievable. It can be done or reasonable. It should be realistic with the time scale and the resources. Time bound, the deadline need to be defined. Okay. As we can see, यहाँ पे दो target दिए गए हैं regarding the policy requirements. If you see this, let's start with this example. Review, like एक individual है, एक person है, okay, they have to review 480 risk assessment within a 12-month period. ये एक target दिया गया. और दूसरी टारगेट की बात करें 48 रिस्क असेसमेंट विद इन टू रिव्यू 48 रिस्क असेसमेंट विद इन 2 मंथ. सो लेट्स सी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को ये मेट हो रहा है. फर्स्ट थिंग, क्लियरली डिफाइन एंड प्रिसाइज, क्या काम करना है? हाँ डिफाइंड है, रिस्क असेसमेंट करना है. मेजरेबल है, हाँ मेजरेबल है, 480 रिस्क असेसमेंट करना है. ओके. अचीवेबल है क्या? नो, एक पर्सन के लिए अचीवेबल नहीं है. रियलिस्टिक है? नो. डेडलाइन डिफाइंड है? यस, डेडलाइन डिफाइंड है. Right, so this target is not meeting the SMART objective. Okay, so this target is not acceptable. Again, if you see second example, specified है, clearly defined है, क्या करना है? हाँ, we have to do the risk assessment. Measurable है? Yes, it is measurable. 48 risk assessment to be reviewed. Achievable है? Yes, 48 in 12 months it can be achievable. Realistic with the time scale? Yes, it is realistic. Deadline is clear? Yes, it is clear. So hence this target is meeting the SMART objective. Okay. अगेन याद रखिएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आगे भी जाकर मैं बहुत बार पूछूंगा. ओके. नेक्स्ट इज द फैक्टर्स. व्हाट फैक्टर्स और रीजन ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर्स टू रिव्यू द पॉलिसी. हमें कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में पॉलिसी को या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन की पर्सनल रोल्स ऑफ द पर्सन, changes in management structure, changes in ownership, process or method, significant changes in technology, introduction of new plant, machinery in the workplace. Okay, significant changes in legislation, like introduction of new legislations, rules or regulations on the request of health and safety representative. Revision in risk control measure, new hazard introduce हो रहा है, new risk develop हो रहा है. Okay. आफ्टर मेजर एक्सीडेंट और इंसिडेंट, कोई नोटिफाइबल इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तब भी हमें पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए. ड्यू टू एनफोर्समेंट एक्शंस और ऑन एडवाइस ऑफ एनफोर्समेंट बॉडीज. आफ्टर ऑडिट where the policy become ineffective, audit indicates a deficiency in risk control measure. After consultation output like workers complaint, after passage of time. Okay, in general annually once in a year the policy need to be reviewed. Agar time pass, like if we're passing the time, then at that time also we need to review the policy. Okay, these are the circumstances in general that indicates to review the health and safety policy. Is it clear? हाँ जी. Yes, sir. Yeah. Next is after completion of the policy need to be communicated to all the stakeholders. So employer must bring the policy to all employee attention. This can be done by displaying in the notice board, introducing in the induction or training sessions, considering in a team briefing at TBT, by using newsletters, posters, build into safe system of work or code of practices, on the discussion managers to discuss with the workforce, on health and safety committees, on company's website or internet, during safety talk like meeting and refresher training. Okay, यहाँ पे एक scenario में example है how they have communicated the policy. Mounted with frame document including health and safety management system certificate, policy and public liability insurance. Okay, ये I think OB number 7 से ही extracted है. Okay, so this is how the policy can be communicated. Next is on what circumstances your policy become ineffective. So effective health and safety management system demands a comprehensive health and safety policy which are effectively implemented and which are considered in all business practices and decision making. So the policy need to it should able to prevent the injuries,
accident, ill health, or loss prevention. Okay, commitment of effective leadership. Smart objective target to be considered. It should given a priority. Sufficient resource need to be provided. Personal, like workforce, manager, supervisor, they should understand the aims. Employer responsibility and consultation arrangement need to be ensured. Measurement of the performance, monitoring provision, review mechanism of the policy. Manage awareness of the roles and responsibilities. Training of the management in the roles and responsibility. Okay, consider fulfillment of health and safety legal requirement. Consider as significant and systematic identification of the hazard and risk control measure. Safe working condition and risk control measure. These are the things which makes a policy to be effective. Okay. So here आपके sample scenario में भी एक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन तो हम इंडिविजुअल असाइनमेंट देंगे. ओके, बट ये वाला क्वेश्चन विल डू इट नाउ इन ग्रुप डिस्कशन. ओके, आपको मजा भी आएगा ये करने में. ओबी नंबर 8, task number 7. Okay, managers reasoning for health and safety policy review. Based on email sent by the manager in this scenario, what likely have prompted the policy need to be reviewed. Okay, ओबी नंबर 8 ओपन करेंगे. सिर्फ एक पैराग्राफ ही देखना है. एक मेल का एक पैराग्राफ, एक पेज का मेल है. उस मेल में ऐसा क्या इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टेड है जो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए. ओके, इट्स अबाउट रिसाइकल रिव्यू सेंटर. इफ यू सी, ये देखिए जहां से मेल शुरू होता है वहां से आप देखेंगे. ये ओबी किस कब का है? ओबी है अक्टूबर 2021 का. ओके, तो ये डेट को हमारा, ये ईयर को हम कंसिडर करेंगे फॉर द सिनेरियो. ओके, इस ईयर को हमारा सिनेरियो बनाया सिचुएशन से. ये मेल भेजा जा रहा है 6 सितंबर 2021 एट 9 AM. सो कौन भेज रहे हैं? ईमेल टू द डायरेक्टर. डायरेक्टर को मेल किया जा रहा है. कौन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, एज अ रिसाइकल रिव्यू सेंटर मैनेजर, in particular in my role as a health and safety officer, I believe existing health and safety policy that signed by manager who retired in 2015 will need to be updated. And health and safety legislation mandate that organization must write, implement, communicate, review the health and safety policy. In addition, the safety standard or guidelines are often rewritten and replaced. New managers are promoted while others getting transferred to other recycle center. This naturally results in recruitment of the managers worker who have idea about different hours and days of working to account for public demand. So we have taken a delivery of brand new skip vehicle that operate around the skips. While these new vehicles are welcome, challenging recycle center targets, it means that workforce have changed the working practices process to meet this target. So when I speak to the worker, they often complain that the procedure outlined in the policy do not reflect what actually happened these days. Okay, in addition, all the facts that have previously been served enforcement order was a reminder that the administrative practical things need addressing. Okay, so thank you. You sincerely, that's your name. Okay, Atkins, REW Atkins. Okay, so यहाँ पे इन दिस मेल ऐसा क्या प्रॉम्प्ट या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है बेस्ड ऑन विच हमें पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड बाय द मैनेजर. मैनेजर यहाँ पे खुद रिकमेंड कर रहे हैं तो रिव्यू द पॉलिसी. सो दैट कैन बी द रीजन. फर्स्ट, जो प्रीवियस मैनेजर थे वो रिटायर हो चुके हैं. पॉलिसी लास्ट टाइम कब साइन हुआ था? 2015. यहाँ पे देखिए वर्ड्स वर्ड्स के बीच में आपको पॉइंट्स मिलेंगे. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, पूरे इतने में से हमें 15 पॉइंट निकालना है. ओके, ऑन द मैंडेट ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है हमें पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है. ओके, इन एडिशन नए इंस्ट्रक्शन रिप्लेस किए गए हैं, रीडाइट किए गए हैं लेजिस्लेशन में, वो भी मैंडेट करता है. न्यू मैनेजर प्रमोट हो रहे हैं तब भी हमें रिव्यू करना है. ट्रांसफर हो रहा है तब भी रिव्यू करना है. ओके, रिजल्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द नए मैनेजर रिक्रूट हो रहे हैं. ओके,
वर्कर्स भी रिक्रूट हो रहे हैं. Okay, the who have ideas about different working hours. Okay, and days of work, accounting public demand. Okay. Delivery new brands के vehicle introduce हो रहा है, that also reason for the review policy. New recycle targets introduce हो रहे हैं, that also can be cause to the review. वर्क प्रैक्टिसेस में चेंजेस हो रहा है, वो भी एक रिक्वायरमेंट है पॉलिसी रिव्यू का. प्रैक्टिसेस में और प्रोसेस में भी बदलाव हो रहा है टू मीट द टारगेट. ओके. व्हेन स्पीक टू द वर्कर दे ऑफन कंप्लेन. वर्कर्स कंप्लेन कर रहे हैं, दैट कैन बी द रीजन. The policy do not Policy. reflect, oh yeah, what actually happening. That could be the reason. Okay, previously enforcement order issue हुआ था, उसके वजह से भी हमें पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए. ओके. न्यू प्रैक्टिकल थिंग. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल चीजों में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. बेस्ड ऑन दैट रीजन आल्सो वी नीड टू रिव्यू द पॉलिसी. कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टारगेट में चेंज हो रहा है, प्रैक्टिस में चेंज हो रहा है, प्रोसेस में चेंज हो रहा है. ओके. कंप्लेन वर्कर्स के कंप्लेंट्स के बेस पे 14 15. और ये एनफोर्समेंट अथॉरिटी वाला, इसको एक में रख देंगे. ओके. जितने पॉइंट एविडेंस मिल रहे उतने का लिखना, और आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए एविडेंस प्लस एक्सप्लेनेशन. ओके. मैंने आपको एविडेंस निकाल के दे दिया, अभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. की पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एविडेंस लीजिए, एक्सप्लेन कीजिए. सर एक विल यू ऑल एग्जांपल दीजिए ना. एग्जाम्पल? ओके. When it comes to based on scenario question, you are not required to highlight the key points. Okay. आप सिर्फ एविडेंस को एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन नंबर 7 ना? यस सर. The information required to in mail. Okay, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं. The policy is signed by manager in 2015. चेंजेस इन की. ओके. आफ्टर रिटायरमेंट of previous manager, is the policy signed by previous manager was retired. This policy to be reviewed.
Then last signed in 2015. Date, right? 2015 na? Okay. Yes. After passes of time, of this cycle reuse center. Okay, that's all I have to mention. So will you all able to do that? हाँ जी, बताइए, कर पाएंगे अभी ग्रुप पे? Yes, sir. सर इसमें एविडेंस कौन सा है, द इंफॉर्मेशन? मैंने बोल्ड किया अभी, पॉलिसी साइंड बाय द प्रीवियस मैनेजर, हाँ। एविडेंस है, बाकी रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है। देन सेकंड पॉइंट में पॉलिसी डेट 2015 में हुआ है, हम्म। तो वो एविडेंस है आपका। एविडेंस हमेशा आपको लार्जली मिलेगा सिनारियो से, ऐसा कोई मायने नहीं है। ओके, एक वर्ड एक टर्म भी आपका एविडेंस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, किस कंटेक्स्ट में उस इंफॉर्मेशन को दिया गया। ओके, ओके नाउ सर। टेल मी हु ऑल गोना ड्राफ्ट आंसर टुडे, रेज योर हैंड प्लीज। आकाश जी, आपके पास लैपटॉप है? यस सर। तो आप एक टीम लीड कर देंगे। ओके, लाइक आप आंसर ड्राफ्ट करेंगे, बाकी आपके कलीग्स आपको मदद करेंगे। ओके, ओके एक टीम सर। को, चलिए आकाश जी एक टीम को लीड करेंगे। ऑन कौन करेंगे बताइए? साद अली जी एक लीड करेंगे, ठीक है। और कौन करेंगे? रविंद्र कुमार महांती जी, बताइए सर, आप करेंगे लीड एक टीम आज? चलिए, नहीं नहीं सर। आप हंस देते तो मैं पागल हो जाता हूँ, ऐसे मत हंसिए। लैपटॉप लेके आएंगे तो और मजा आएगा, थोड़ा हंसने में भी और मुझे बोलने में भी। और बताइए, किन के पास है लैपटॉप? और हम्म, चलिए आपके फैजान भाई को भी दे देते हैं। फैजान जी रेडी है? Yes, sir. शाहनवाज जी कहाँ गए? शाहनवाज पता आलम नहीं जी, सर। यस सर, है सर। क्या आप सर आज आपके फैजान शाहनवाज भाई भाई को को दे बनाई रहे है। I'm tired of being a lead, so आज मुझे रिप्लेस कर दीजिए। लेट मी हैं? डू आज सम किसके वर्क। साथ? ओके, कोई भी। समवन एल्स, कौन करेंगे फिर? और anyone? एक जो आकाश जी एक हुए, एक साथ जी हो गए। ओके, बाकी एक और कोई चाहिए? मेघा जी आ रही देर, यस सर। आप एक टीम लीड कर लेंगे आज। ठीक है सर, ओके। और एक एमडी साद अली ना, साद जी आप एक टीम लीड करेंगे ना? यस सर। ओके, सो रूम इज ओपन फॉर यू ऑल, और आपका स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर दिया है मैंने। जॉइन द ब्रेकआउट रूम एंड शेयर योर स्क्रीन विद एवरीबॉडी, प्लीज जॉइन द ब्रेकआउट रूम। यस सर। बात आपने कुछ चेंजेस किया कि नहीं किया? यू कैन शेयर योर स्क्रीन, कुछ ड्राफ्ट किया है तो शेयर कीजिए, अदरवाइज आई विल मूव ऑन हाँ टू हाँ, अदर।
हाँ सर, कर रहा हूँ एकदम। सर आई विल रिक्वेस्ट कि मैं फर्स्ट प्रेजेंट कर दूँ. Okay, fine, go for it. ओके ओके. यस सर. सर स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. ओके. Number one, as the health and safety legislation mandate, it is required to review the policy. Okay, due to amendment of the rules and regulations, as the health and safety standard and guidelines are revised, so policy also need to be reviewed. Okay, as the manager is changed due to transfer of manager and appointment of new manager, before policy need to be reviewed. Okay, so transfer of manager and appointment है हाथों में. New moving vehicle is introduced, which create a new hazard, and the old policy does not address. Therefore, policy need to be reviewed. Okay, is the practice as the working practices are changed due to challenging targets, so the current policy reflect old ones. Hence, the policy need to be reviewed. Okay, as the working process have changed to meet the target, as the current policy reflect old one, hence the policy need to be reviewed. Okay, as the workers complain that um, procedures given as current policy do not match with the ground reality. Okay, do they mention about ground reality or the current condition? ऐसा कुछ specific mention है? The word ground reality is not mentioned. They are saying that it is not matching with the policy. मतलब. What actual happening these days? Yeah, yeah. That statement need to be used. Okay. Okay. But still ground reality भी चलेगा, but if you use those terms, that will be better. Okay. Next, the enforcement order. Enforcement orders that have already been served address administrative practices and practical control. So policy need to be reviewed. Okay. ये पॉइंट्स आर करेक्ट. ओके, बट हमें चाहिए 15 पॉइंट. सो और भी थोड़ा like जैसे कि यहाँ पे एनफोर्समेंट अडर्स के बेस पे एक पॉइंट होगा, प्रैक्टिसेस में चेंज अगर कर रहे हैं उसके बेस पे एक पॉइंट होगा, अदरवाइज 15 पॉइंट्स आपको मिलने में दिक्कत हो जाएगी. ओके, Okay. Okay. या फिर अगर बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हैं कि नहीं मैं पॉइंट सेग्रीगेट नहीं कर पाऊँ, फॉर एनी सिचुएशन होना चाहिए, बट बाई चांस अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड बोर्ड द कोर एविडेंस. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, अगर एक पॉइंट में आपने दो एविडेंस लिखा, इट्स वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस कि एक एग्जामिनर एक पॉइंट के पीछे आपको 2 मार्क दे. ओके, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखें. Okay. अदरवाइज इट वाज अ गुड वर्क. Okay, sir. I think, sir, we need a discussion on the point number 3. पॉइंट नंबर 3, Uh, व्हाई? there is a manager in change due to the transfer of the manager. So we had a positive discussion about do we require the changing the policy for that one? यस, इफ देयर No, इज, no, no. हमने वही तो पढ़ा अभी. No, there is We I think had one point. Okay, we okay, had that is a some, different point. Okay. okay. So Megha, what was that point? go If we to the can, screen, we have to discuss that point also. We no, have the, given for the that line. point. Yeah. Just a second. Yeah, so there is one point where it is mentioned that results in recruitment of managers and workers who have ideas about different hours and days of working to account for public demand. So Public demands. this also needs policy review. Can If we add this point? based on recruitment, if you are changing the working hours as they have the experience, okay, they have ideas about different working hours. If you are changing the working hours, definitely we need to review the policy. तो उस मोड पे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ओके, Okay. लाइक ये मोड करना पड़ेगा कि एज द वर्कर्स हैव द आइडिया अबाउट डिफरेंट आवर्स ऑफ वर्क, if organization changing working hours, then we need to review the policy. Okay. Okay. Sir, I have a doubt. Like we discussed, it was also mentioning on public demand. Yes. There Yeah, was a that's word only called point. public demand. So can we quote that word? Because of public demand, we can there's a need to review policy. Public demand on what? या ऑन प्रोडक्शन, हाँ उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. जैसे और से जैसे आपने जो मार्क करे थे स्टेटमेंट्स उसमें जैसे हमने ये वाले पॉइंट को क्लब करा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैनेजर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर. सो वो राइट. क्लब्ड पॉइंट है तो उसको 2 पॉइंट्स बना सकते हैं.
बिल्कुल बना सकते ओके हैं। ओके। थैंक यू। Okay. नेक्स्ट रूम नंबर 1, आकाश जी, वेर इज आंसर सर? ये क्या है? नो, आई वॉज आस्किंग यू टू ड्राफ्ट ए कंप्लीट आंसर, आपने एविडेंस हाईलाइट किया। नो, ऐसा नहीं चलेगा सर, यू हैव टू ड्राफ्ट ए आंसर। जैसे अभी रूम नंबर 3 का आपने देखा, दे ड्राफ्टेड ए कंप्लीट आंसर, वैसे आपको कंप्लीट आंसर ड्राफ्ट करना है यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द सिनेरियो। और आपके रूम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे आकाश जी, बताएंगे मुझे? अनम्यूट माइक। प्लीज बताइए। हेलो, जो मेरे साथ थे, हेलो। ओनली गौरव जी का आवाज मैं सुन पा रहा था Yeah. जब मैं आपके टीम पे गया था। व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. यस सर, मैं भी था। Yes, sir, मैं था। अनसिंग। हाँ, यस मैं तो भी सर। था। आप लोगों ने उनको असिस्ट क्यों नहीं किया कि हमें आंसर ड्राफ्ट करना है? हाँ। सर मुझे लगा कि मेल के द्वारा जो था कि बस पॉलिसी जिस चीज में होना चाहिए उसकी वजह से बस वो हाईलाइट किया उस वर्ड्स को, सेंटेंस को। नहीं, आप लोग कंटेक्स्ट ही समझे नहीं क्वेश्चन का, यानी कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया ब्रेकआउट रूम का वही नहीं समझे आप लोग। यू आर सपोज टू ड्राफ्ट ए कंप्लीट आंसर। ओके, सरा जी आपका आंसर ग्रुप पे शेयर कर देंगे। सो Okay, sir. रूम नंबर 1 इज कम्प्लीटली, यू गाइस हैव मिसलीडेड, लाइक मिसगाइड हो गया। ओके, Oh, आगे से ध्यान रखेंगे उस चीज को, जो भी इंस्ट्रक्शन है yes, yes. यस सर। ब्रेकआउट होने से पहले यू शुड क्लैरिफाई फ्रॉम मी कि सर क्या डिस्कशन है, अगर आपके मन में डाउट है। ठीक है आकाश जी? ओके यस सर। सर। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. नंबर 2, एमडी साकिब जी थे, साथ जी थे, राइट? हाँ, ड्यू टू न्यू व्हीकल एडेड इन द प्लान, ओके, पेनिट्रेटिंग हैजार्ड्स दैट नीड टू रिवाइज द पॉलिसी। कौन सा व्हीकल यूज हुआ है? उसने रिसाइकल यूज इन द व्हीकल ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया है ना व्हीकल का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रांड न्यू कीप मूविंग व्हीकल, वो टर्म यूज करना है। ओके, एंड existing manager got retired, new manager appointed, changes in management, okay, after appointed changes in management, okay। यहाँ पे explanation चाहिए पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा। ओके, current policy outline the policy do not reflect actual happens these days, so current policy need to be reviewed, okay। Current policy does not reflect enforcement order, so policy need to be reviewed। Does not reflect enforcement order, no, enforcement authority का कुछ और है ना, where it is, लाइन क्या था एनफोर्समेंट अथॉरिटी के का जो था? Just a minute, sir. They have been served enforcement order। Yes, sir. Organization has been served in information order. मेंशन की एनफोर्समेंट ऑर्डर के डिमांड को मेट कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं। Okay, sir. तो पॉइंट Okay, नंबर sir. 4 कम राउंड है। ये बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। मेरे से मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। Just a minute. नेक्स्ट, नियर मिस इंसिडेंट, चेंजेस इन वर्किंग प्रैक्टिस, प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू Sir, इक्विपमेंट। this regarding this enforcement one, over there the manager already stated that in addition to all this, the fact that we have previously been served an enforcement order, was a reminder that administrative and practical things need to be addressed. राइट, so on the on the visit of enforcement authority, we need to, like, based on the outcome of that authority, we need to review the policy, but current policy does not reflect enforcement order, ऐसा कुछ statement है ही नहीं। okay, that's what my concern is। Yes, sir. Noted, sir. New manager are promoted while other get transferred to other recycle centers, so policy need to be reviewed, okay। Previous enforcement order reminded improvement needed, the manager mentioned that the organization has previously received enforcement order, again ये repeat हो रहा है ना?
yes, it's repeated from 4. रिपीट एविडेंस पे मार्क नहीं मिलेगा, किसी एक पे मिलेगा। आई थिंक ये वाला पॉइंट ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इसका Okay, sir. पॉइंट। Health and safety legislation and standards being rewritten and replaced because of these days. Okay, situation are not same as for the work. Not reflecting as I think ये evidence भी कहीं पे दिया हुआ है। I think point Yes, number sir. 3 similar evidence है ना, what actually happened these days. Wait. Rewritten, replace. Okay, ठीक है। Point it is different. It's about legislative changes. Okay. Changes equipment. I think ये वाला आपने यूज किया शायद से, हाँ। Point number first. फर्स्ट पॉइंट में हाँ, तो वो रिपीट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट उससे बेहतर है। Yeah. The manager explained the law and safety guidance often change over the time. That means policy need to be reviewed. Legislative changes again ये repeat हो जा रहा है। Based on point number 11 on complaint of the workers. Okay. Workers have told the manager that many procedures are rewritten, policy do not match with what happened in real daily operations. So this clear reason for update the policy. Point number 13 complete नहीं हुआ है, right? Yes, sir. नेसेसरी चेंजेस करके फाइनल सबमिट करेंगे। आई थिंक इस बार सरा जी का जो टीम था उनका जो आउटपुट है अच्छा है, बट पॉइंट एडिशनल चाहिए। ओके, बट आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स शेयर कर देंगे। जहां जहां पे मैंने गलत बोला ना सर जी, उसको हटा दीजिए, बाकी रिमेनिंग आंसर्स भेज देंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। So now what you all have to do for the next session, आप लोग सैंपल सिनारियो और ओबी नंबर 1 पढ़ के आइए। ओके, ओबी नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, द रीजन फॉर मैन लाइक बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। फॉर द सैंपल सिनारियो हमने बहुत बार पढ़ा है। सैंपल सिनारियो के टास्क नंबर 3, इफ यू सी द टास्क, व्हाट डज इट सेज? Effective health and safety policy arrangement. The contractor manager tries to reassure the health and safety committee that company has an adequate statement of general policy for health and safety, and this is the policy commitment that have been shown in the policy में ये commitments उन्होंने दिया है। So question ये है, based on scenario only, comment on how effectively this policy have been implemented. सिनारियो से आपको ये ढूंढ के बताना है कितना इफेक्टिवली इन पॉलिसी का जो एक कमिटमेंट है ये फुलफिल किए गए। जैसे कि इफ यू सी दे हैव गिवन ए कमिटमेंट कि वी विल प्रिवेंट द एक्सीडेंट, तो ऑन व्हाट एक्सटेंट यू फील कि उन्होंने एक्सीडेंट प्रिवेंशन के ऊपर काम किया है? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कमेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कमेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी दे हैव नॉट वर्कड ऑन द प्रिवेंटिव एक्शन, दे हैव फेल्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट to prevent the accident, as despite of multiple near misses and minor collision, no preventive actions have been taken by the organization, right? Even operational managers के जो behavior है, this is nothing have been happen over the year, so nothing to worry about. So ये approach क्या दिखाता है? Those approach demonstrate that the organization has failed to prevent the accident. Okay, next, investigate accident and near miss. Again, while health and safety advisor discussing with the worker, what do they identify? उनको क्या मिला? They identify that worker do not report any near miss and minor collision because they were afraid to being blamed. It means no reporting of incident. It means no record of those, which indicate that organization failed to investigate the near miss or minor collisions. Okay, that's how it works. आपको evidence identify करना है, लाइक ऐसा क्या एविडेंस है, क्या सिचुएशन आपको सिनारियो से मिल रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस इन कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। ओके, वी आर एबल टू डू दैट। कल ग्रुप एक्टिविटी में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, टीम में वही रखूंगा, आज जो टीम रहा है वही टीम रहेगा। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर भी ड्राफ्ट करके आइए ओबी नंबर 1 का, जो बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टास्क 3। तो इससे क्या होगा, जब आप कल ग्रुप टीम मीटिंग में आएंगे वहां पे
सिर्फ जो पॉइंट आप लोगों के ग्रुप डिस्कशन में लगा इनअप्रोप्रिएट उसको हटाना रहेगा। ओके, सो दैट थोड़ा इमीडिएट इफेक्ट में आपका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, एवरीबॉडी सब अपने अपने लेवल पे एविडेंस ढूंढ के अपना पॉइंट लेके आएंगे। कल जब ग्रुप डिस्कशन होगा, डायरेक्ट जो भी लीड रहेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स काटेंगे। फैब्रिकेट करना है या हमें पॉइंट्स डिलीट करना है जो कि इनअप्रोप्रिएट लगे। ओके, एवरीबॉडी शुड डू दैट। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। या फिर आप लोग चाहेंगे तो मैं सबको इंडिविजुअल टास्क भी दे दूँ। चॉइस विल बी योर्स, ग्रुप डिस्कशन और इंडिविजुअल टास्क। हम्म, बताइए। ग्रुप पीडी रख के डिस्कशन आंसर सही दीजिए। रहेगा सर। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन से रहेगा। ग्रुप सही डिस्कशन रहेगा। सर। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन करना है तो और एक टर्म भी है यहाँ पे। कल ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन आंसर ड्राफ्ट करेंगे, मैं नाम ले लेता हूँ, वो तैयारी के साथ आना। ओके, अंश, अंश जी लीड आप करेंगे, भले ही कोई ड्राफ्ट करे लीड आप करेंगे। अंश जी सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, कल आप एक टीम लीड करेंगे। ओके सर। रविंद्र कहाँ गए? रविंद्र कुमार महांती, रविंद्र महांती, जी सर, बोलिए सर। लैपटॉप हो या ना हो, आपके टीम को आप लीड करेंगे। ओके, नहीं सर, अभी मेरे को, मैं खाली क्लास पे अटेंड करता हूँ बस। और तो फिर क्या, हाजिरी लगाने आते हैं? हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। और एक सामी आलम जी करेंगे। ओके, ओके लीडर सर। भले ही कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा उस टीम से। ओके, ओके। सबको आगे आना है, सिर्फ सराज जी को, मेघा जी को, या फैजान जी को, या आकाश जी को, इनको पास नहीं आना है, सबको पास होना है ना, राइट? राइट सर। तो फिर पास होना है तो करना तो पड़ेगा ही। आज आप यहाँ डर रहे हैं, कल आप इंटरव्यू में डरेंगे, परसों आप IG2 में डरेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर अगर बोल। अगर दिन में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, अगर तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर आपको मैसेज कितने बजे के बाद से कर सकते हैं सर? सुबह 10 से शाम को आपकी क्लास होने से पहले तो होने तक आप टेक्स्ट कॉल सब कर सकते हैं। ओके, अगर किसी वजह से मैं रिस्पॉन्ड या इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ, फिर भी जितना जल्दी हो सके, जैसे फ्री हो जाऊंगा मैं रिस्पॉन्ड कर लूंगा। सर मैंने अपने लैपटॉप में आज क्लास वर्क गूगल क्लासरूम डाउनलोड किया और मीट ज्वाइनिंग डाउनलोड किया, तो सर गूगल क्लासरूम में मुझे मिल नहीं पा रहा है सर कि टोटल कितने असाइनमेंट बनाना है सर। तो सर क्या कहाँ पे मिलेगी सर, एक बार आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बताऊंगा। आपके पास अभी लैपटॉप है अंश जी? अंश जी आपके पास लैपटॉप है? जी सर, जी सर। तो आप लैपटॉप से कनेक्टेड होइए, तब तक बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन है मैं एंड में रिजॉल्व कर दूंगा, वो इशू आज ही कर देंगे। ओके ओके, सर। व्हाट अबाउट अदर्स? Sir, हाँ, sir, my question is from previous day task in OBE scenario 58. यस। Yeah, you commented that don't start with generic duty. So I'm little bit confused that what I have. आप सिर्फ पहले आप क्या बोले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, Yeah. ये टर्म यूज कर रहे हैं आप। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट व्हाट द ट्रीटमेंट। तो Yeah. क्या होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट दिया ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि क्या किया है इन्होंने, हाउ दे हैव फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स व्हाट, वो टर्म का मतलब यही था। ओके, क्या I करना have, चाहिए? yes, sir. I have added appointment of competent person. So हाँ, you highlighted with red. Yes, sir. Explain, sir. अपॉइंटेड, हाउ डू दे अपॉइंटेड कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या एविडेंस है सिनेरियो से यूज किया आपने? And it's opening my task. नहीं ना, नहीं. एविडेंस नहीं है तो mark नहीं मिलेगा ना वहाँ पे। Okay. क्वेश्चन आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिनेरियो है ना, सो वी कैन नॉट टेक। जिम्मेदारी है डेफिनेटली, आई एम एग्री विद इट। अगर है तो क्या कैसे फुलफिल किया इन्होंने, वो हमें बताना है। Sir, actually MD and two shift
shift manager are taking care of day-to-day operations. So I written that MD had two shift manager for taking care of overseeing day-to-day operation. ये सारे जेनरिक हो जा रहे हैं। क्या आप समझा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, बट आपका क्वेश्चन ये है ही नहीं ना। आपका क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर मैनेजर इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी इस जगह पे फिलहाल कैसे अच्छे से फुलफिल किया, आपको उसके ऊपर कमेंट करना है। दैट्स ऑल। ये डिबोस का यही सबसे कुछ एक चैलेंज भी बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में वो आपको बोलता है कि इतने में ही आप रहिए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप हो गए, एफर्ट आपका जाएगा, आपका टाइम मेहनत सब जाएगा, बट आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ओके, तो यू शुड बी मैंने भी कंफाइंड। अपना सबमिट किया, लेकिन वो कल वाले असाइनमेंट में सबमिट करते हैं ऐसा। उसको हटा के दोबारा सबमिट कर दीजिए। And I have also a concern about OB 59. What? That what do we consider ILO code? Like how can we write? I have some confusion. ILO कोड प्रैक्टिस कल मैंने बताया था आपको, ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट से लिया हुआ है। कंप्लीट क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट से ही अलाइंड है। और मैं पूरा एक्यूरेट आंसर तो अभी आपको नहीं दे सकता, पॉसिबल आंसर मेरे पास भी नहीं है। ओके, मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा था कि आप लोग क्या कितना हद तक कर पाते हैं। ओके, इफ यू सी, मैं कुछ एविडेंस आपको हाईलाइट करा के दे देता हूँ जैसे इन्होंने क्लाइंट को अच्छे से मैनेज किया। लाइक एज ए क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कैसे इन्होंने अच्छे से मैनेज किया होता। हाँ, हाउ डू दे मैनेज द कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सो इफ यू सी एसएसएम कंसीडर व्हेयर इट इज, यहाँ से शुरू हो जा रहा है आपको कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के सारी चीजें। Yes, sir. हाँ, ऑटोमेटेड मशीनरी, क्वाइटर मशीन, दिस विल बी, ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं। स्कोप पहले डिफाइन हो गया, हमें कॉन्ट्रैक्टर क्यों चाहिए, बिकॉज द प्लानिंग बिल्डिंग, they plan to build a Second. secondary building here, okay, install new automated machinery, okay, that will be quieter than the existing machine। ये उनका स्कोप डिफाइन हो गया। okay, they are hiring experienced architect, that also a positive thing। वही कॉन्ट्रैक्टर को इनविटेशन कहाँ पे गया है, ऐसा कुछ है क्या? Yeah, sir. The HSM considered 3 local contractor just नीचे। हाँ, they have hired experienced architect, work positive thing हो गया। उसके नीचे। हाँ, फिर कंस्ट्रक्शन। Yeah. वो the HSM considered local contractor just नीचे से। Yeah, all the documents have been accessed। Yeah. HSM consider local contractor for the construction। HSM invites representative of the contractor to visit and discuss the project before appointing। They are discussing with them। Yes, sir. That also worked well। Each contractor submitted proposal that include costing, detail of how they will carry out the work. This proposal including roles and responsibility, risk assessment, method statement, qualification, how they will report investigation and incidents. All contractor plan fence, okay, all contractor plan to fence up the site to prevent unauthorized access। HM also check the customer reference। ये उनके सिलेक्शन अप्रोच हो गया आपके। ओके, इन सबको सब पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं आप। ओके, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शंस के एक पॉइंट बना के उसके नीचे सब पॉइंट। देन क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर रेफरेंस को भी चेक किया गया। दैट आल्सो वर्क वेल फॉर मैनेजिंग द क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एज अ क्लाइंट। ऑल्सो बिफोर सिलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर बजट भी कंफर्म कर दिया गया मैनेजमेंट टीम से। ओके, दे हैव गिवन अप्रूवल टू द कॉन्ट्रैक्टर। टाइम स्केल भी डिफाइन किया गया, कितने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा। 6 वीक रहेगा कंस्ट्रक्शन वर्क and expected to take 12 weeks as it is simple and fabricable building। okay, contingency time for 2 weeks have been factored in for the unexpected delay such as weather condition after build। okay, यानी कि इन्होंने हाथ में 2 वीक एक्स्ट्रा और भी रखा। मैं कंसिडरिंग कि अगर कल को जाके कोई वेदर कंडीशंस का इशू, वेदर का इशू हो जाता है। okay, after building is complete, new manufacturing machine arrive on the site and HSM notified level inspector।
Okay. Project team member contractor will consist to 10 constructive construction worker led by a full-time site supervisor. Okay. Before work start, HSM has a pre-construction meeting with the contractor. Okay, ओपनिंग मीटिंग किया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद इंडक्शन ट्रेनिंग भी दिया गया कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को। ये सारे पॉजिटिव थिंग्स है Yes, रिगार्डिंग sir. मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर। देन कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है इसका भी अलग पॉइंट बन जाएगा, मैंने एक साथ में हाईलाइट कर दिया। वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया, दैट आल्सो गुड थिंग। दे आल्सो टोल्ड नॉट टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्शन है वो भी डिफाइन किया गया। ईच मॉर्निंग HSM विल हैव ए मीटिंग विद द साइट सुपरवाइजर टू डिस्कस द प्रोग्रेस, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए रेगुलरली मॉर्निंग मीटिंग भी वो कर रहे हैं। एडिशनल रेगुलर इंस्पेक्शन भी वो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शन का भी टू चेक द सेफ्टी रूल्स बीइंग फॉलो, ये सारे भी सरप्राइज ऑडिट इंस्पेक्शन का भी प्लान करें। So these are the positive things about managing the client as a contractor. Sorry, contractor as a client by the HSM. Yes, sir. But how can I align with this ILO code of practice? My We're concern is not that how. always aligned to be with align with the clause. Yeah. क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि कहीं पे अलाइन Yeah, करना है। the client duty under ILO code of हाँ, practice. सेम ड्यूटीज आपके कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में भी Yeah. सेम ड्यूटीज है। आप कंपेयर किए आपका आंसर जैसे Yeah, कि right. Yes, sir. दिस इज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू, और कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने पूछा, अदरवाइज ये सिंपली कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट भी पूछ सकता था। 2.5 था ना क्लॉज नंबर ये। इवन Yeah, यहाँ पे 2.5. क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इन्होंने क्लॉज नंबर भी नहीं स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में, सेक्शन कौन सा स्पेसिफाई भी नहीं किया, हमें खुद नहीं। से ढूंढना पड़ रहा है। जनरल ड्यूटी ऑफ क्लाइंट यहाँ पे देखेंगे, coordinate monitor competent person to coordinate the activity related to safety and health in the construction project. Procedures to ensure employer including contractor subcontractor performs the risk assessment, establish risk control measure with their work, submit the work plan, inform the client about any significant changes। तो यहाँ पे हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क असेसमेंट को कंसिडर कराया गया है, Yes, sir. राइट। क्लाइंट के सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। Procedures to ensure the other parties appointed to construction project comply with the duties set out with section 2.6 with this code. Okay, like उनके पास प्रोसीजर है जैसे कि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कंप्लाई कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे ड्यूटी के साथ कंप्लाई करते हुए रूल्स फॉलो करते हुए काम कर रहा है कि नहीं। प्रोसीजर्स टू इवालुएट द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, सिलेक्शन अप्रोच हमने पहले पढ़ा, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के दौरान भी आपने सिलेक्शन अप्रोच पढ़ा था, राइट। थ्रू रिक्वायर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वहां पे भी स्पेसिफाइड है आपके सिनारियो में। ओके, कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, those criteria should be include detail of the contractor health and safety management system, project specific health and safety plan, वो भी सबमिट कराया गया है क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्टर ने क्लाइंट को। the client should ensure all contractor have a requisite knowledge and skill of performing the reverse। yes, 20 साल एक्सपीरियंस वाला आर्किटेक्ट अपॉइंट किया कॉन्ट्रैक्टर के इन्होंने। The client should obtain information document concerning occupational health and safety procedure, personal qualification, worker skill certification, as well as health and safety performance। उनके रिकॉर्ड्स इन्होंने सबमिट किए वर्कर्स के कॉम्पिटेंस का, वो भी कंसिडर हो जाएंगे। इफेक्टिव ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मॉर्निंग में इंडक्शन करा रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं मॉर्निंग में डेली, राइट, विद द कॉन्ट्रैक्टर। Arrangement of reporting, recording, and notification, occupational injuries and occupational diseases। I think reporting के बारे में भी सिनारियो में इंफॉर्मेशन है। They are guiding the contractor about how to report the incidents, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. तो वो बोले। Then provision of hazard awareness, information, instruction and training, again आपके रिस्क असेसमेंट के दौरान उनको hazard awareness हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये सारे आपके इंडक्शन में भी कवर हो जा रहे हैं, मॉर्निंग मीटिंग में भी कवर हो जा रहे हैं, राइट। रेगुलर मॉनिटरिंग, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, डेली इंस्पेक्शन, पीरियडिक जॉइंट सेफ्टी इंस्पेक्शन, अगेन वही इंस्पेक्शन का पार्ट आ जा रहा है।
follow up on-site policy, procedure, arguments by the employer, including contractor and subcontractor. Inform all contractor and other involved parties to project relevant risks to health and safety of the workers, which client should be aware of. आप जब रिस्क असेसमेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पे उनको हजार्ड के बारे में बता रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ओवरहेड पाइपलाइन का एक हजार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी का एक हजार्ड है, Yes, कॉन्ट्रैक्टर sir. को वो बताया नहीं गया है। When using contractor subcontractor, client should ensure contractor subcontractor develop a policy management plan. Definitely they have the plan. Client responsible to ensure contractor to meet the requirement of the health and safety management system. Again, आप उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो इस रिक्वायरमेंट को भी मेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्लान should identify potential construction risks set out with the technical details to mitigate और preventive measures. डेफिनेटली इन्होंने हैजार्ड आइडेंटिफाई किया और उसको मिटिगेट करने के लिए भी उन्होंने कंट्रोल मेजर वहां पे दिया है। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड को लेकर कुछ तो है ऐसा। Health and same safety and health rights outlined with paragraph 2.1.6 apply to contractor and subcontractor their worker to work with established including training requirement, procedure for investigating accident, occupational illness, dangerous occurrence. Where required, only such contractor subcontractor are used have been fully duly registered और holding the license. Cross verification किया आपने रेफरेंस से। Contractor specifies safety, health and safety requirement as well as sanction penalties in case of non compliance. ओके, वो कंसिक्वेंस का पार्ट है, वो फिलहाल हमारे सिनेरियो में उसको लेकर कुछ कमेंट्स है नहीं। In estimate the period of completion of the work stage, overall completion of the construction project, client should take account of health and safety requirement during construction project. That's what done by the organization. Adequate welfare facility आप इंश्योर कर रहे हैं, बाकी अदर अरेंजमेंट्स भी आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए इंश्योर कर रहे हैं। ओके, यही आर्गुमेंट को सिंप्लीफाइड किया गया आपके कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ तो कुछ प्रिसाइज्ड है ही नहीं, जबकि आप जब स्लाइड में देखें कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट वो वेल प्रिसाइज्ड है इससे। तो आपको ऐसे Okay. मैंडेटरी नहीं है कि मुझे लिखना है क्लॉज नंबर 2.5.1, ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है। ओके, Oh, I wrote in the same way that as per ILO Code of Practice 2.5.1 that ये so, रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आप कंटेक्स्ट समझ गए। ओके, दैट विल बी एनफ। sir. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? Yes, sir. Two things, sir. यस सर। There are two things. On my yesterday's assignment, you have commented something. So I will reply to that and please check that. Other than this, can you please share the new format of the report, which you IGT showed on the first day? Yeah. I think I was uploaded in a classroom. Actually, I asked that thing from my counselor as well, but she was said you need to ask sir ओके for the भाई, new लेट मी सी। मैंने क्लासरूम में अपलोड किया था, अगर आपको class. सिलेबस में, लेट मी सी, अगर नहीं है तो मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। दैट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, क्लास में एडेड नहीं है। I will share it on a WhatsApp group now. आईसीसी का टेम्पलेट और जो निवोस का गाइड है वो सारे मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। Okay, sir. Thank you. Any other questions? So, guys, I'm planning to conduct session tomorrow at 7 or 7:30. Are you guys okay with it? Or 8:30 as No, usual? it's fine. It's fine. 8:30 will be probably okay because I'm Okay, fine. Then we'll go with 8:30. Okay? कुछ आपके प्लान है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 को ही रहेगा कल क्लास। ओके,
सर कल OB1 का OB1 हाँ सैंपल सिनारियो, ये दोनों को सिनारियो पढ़ के आइए। ओके, सैंपल सिनारियो का कौन सा टास्क बोला मैंने? आई थिंक टास्क सर ओनली नंबर, वन है ना? OB नंबर 1 अलग है, सैंपल सिनारियो अलग है, वो तो पता है ना सर आकाश जी? दो सिंपल। सिनारियो पढ़ के आना है। ओके, सैंपल सिनारियो का रहेगा टास्क नंबर 3। ओके, और FLT सिनारियो OB नंबर 1 उसका रहेगा टास्क को टास्क को। तो सिंपल सिनेरियो कहाँ है? सिंपल। सबसे पहला वाला सिनारियो कार पार्किंग सिनारियो आपका सैंपल सिनारियो, ओके। FLT सिनारियो आपका OB नंबर 1 है। ठीक है। Okay then, that's all for today. See you all tomorrow at same time. Yeah. Good night. Okay. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, everyone. Yeah. Good night. Good night.